Practically, I tested on real-time basis for 3 to 6 months period. Okay. If it is partially successful, then I just go for the back testing of the entire things, actually right from 1 year or 1.5 years. So that's the reason. So I would like to authenticate myself, because I am giving it for the public consumptions, whether it is for a learning or real-time basis trading and all that. So unless I get 100% satisfaction, I don't want unnecessarily it will go. I say it will misfire for someone else, and they may incur some loss. So because every paisa is a paisa, particularly this group is almost 90%, more than 90% on retired people actually. So I am also one of that retired guy. I don't want to waste even a single pie, even though if I don't earn a single pie. On that basis only, that is the reason I have taken this time. So in this model, I was already working for 3 to 4 months. Then after that, I back tested for the right from January 2020. Then I could able to make it out, okay, fine. And I started playing in this model also, and I'm getting a good amount of it. Okay, now I am going to straight away to the model without wasting further time. Boliye, sir. Ramishnan-ji. The only complaint is that people are saying Umaji is not giving enough works. No, that is I fully agree. I know that is the reason today it's quite difficult to be sitting idle, because that is a very boring in nature. Then I thought, before I start that main model, the Sage model, there are lot of versions are there in the Sage model. Actually, before that, let me keep. What is Sage? What is Sage? Thoda bataiye na. Sir, Sage, I given the number Sage, name Sage means S for simple version, A for arithmetic version, G for geometric version, and E for exponential version. For everywhere, that's a requirement of fund is there. If you go over and over up to the exponential, it is for HNA games, high net worth individual games. So geometric and this exponential is still under development. It is already working, but it's still under development. I never easily get satisfied unless I thorough with that for a year or so. Only then I release that model. Before that, it is actually, I think, presumably, I think I may be wrong. It is immature to release the models actually. If it is not authenticated up to 90-95% of perfection, efficacy, rather I could say. So I am not releasing those things actually. Still under work is going on in that. But simple I have to start. Anytime we may start. Simple and simple come arithmetic. Both the things I am combining. Once they do it for 5-6 months, then straight away I will expose them, or 6 months or so. I will expose the members actually in a pure arithmetic version. So that by the time 6 months, they will come to know the efficacy of the model, how it works. So when they will have the confidence to go further for volumes actually without having a fear. And the best thing in this model is, you don't need to stick around to the laptop for so many times, only 7 to 8 times, 8 longs and 8 short throughout the year. That's all, nothing more than that. Not more than you'll get to 14 to 16 times. You have to go to the computer in the whole year. The rest of the year you can enjoy, and the returns are very good. Umashankar ji, where to enjoy? We are enjoying on the laptop only. Where to go for enjoyment all day? No, there are many who don't do enjoy, so they are allergic to laptop sitting. उमाशंकर जी, सेज का मतलब है तो just trade ले लो और चुपचाप बैठो सेज की तरह. That is the meaning, correct? That is main thing actually. That's all. So actually, when Uma takes a vacation, he carries his laptop with him and he enjoys. That is what it means. But actually, no, sir. Because I'm all. Let me be very frank. I'm a very old version. I'm now touching. I'm going to touch 67 actually. I don't have that much energy. I pray actually the God to give Mr. Kothari a lot of energy to lead this group. But I also pray to God to give me at least 50% of the energy. So then I can sit in front of the laptop. That is the reason I prefer the currency only, so that I can have best of the both worlds. So I will be busy with my grandson also, and I will be busy with the other activities also. So I can do some currency trading and make some decent money. Old model with new techniques.
Yeah. Old model with the new technique. My first Guruji in the currency is Mr. Muralidhar Rao. He only handholded me and initially I was a small child. He used to hold my fingers actually and taught me for walking in the currency. Of course, थोड़ा The सा child has run away now. बच्चा बड़ा हो गया वो तो दादा के हाथ में या पापा के हाथ में आते नहीं like that. Now I am running here. So I am just starting, sir, with your permission. Yeah. All waiting for your program. Full 100 capacity. Sir, so this is a proprietary training model. This is for the sake of putting, that's all. Please don't take it in this order. Proprietary training model being given to the members of this group on strictly for paper trading basis, totally free of cost. Members are strictly advised not to trade on a real-time basis, even though the training is being given on a real-time basis. It will be presumed that the members trading on real-time basis by copying the training data on any trading platform will be consciously doing on their own will. As such, the group or the admin or the trainer will not be blamed blamed or are not responsible for any loss incurred in the process. As I am not a SEBI registered analyst, please consult an expert before trading in the market. Okay, sir. आपका तो बहुत टफ है भाई डिस्क्लेमर आपका डिस्क्लेमर तो सर क्या है सर एक बात बताऊं सर इस ग्रुप में everybody is giving selfless actually ठीक है everybody is selfless. Something should not happen to me and happen to the admin also. You also. You are taking a lot of things actually. Those things in the back of the mind at this age it works actually. So that is the reason that everybody. My intent of giving is everybody learn the knowledge and apply and do it. That's all. Right. Sir. Okay. So they certain I know everybody will do it. After this, the activities will increase. It will increase hugely. It will increase. I know that, but. Okay. On a paper, it should be, that's all. Yeah, carry on. Ma, you have made it full screen? Yeah, this is the full screen, sir. Okay, fine. Yeah, Dikra, sir. You see, again, in this Excel sheet, sabko dikh raha hai na, sir? Yeah, it's very clear. Yeah. Yes. Clear. Just a minute. थोड़ा सा हैंग हो रहा है. डाटा हो गया. हाँ, वो डाटा बहुत ज्यादा हो गया सर मेरे कंप्यूटर लैपटॉप में. इतने डाटा. अभी वो हैंग हो गया. अभी वो 2 मिनट तक उसमें घूमता रहेगा. रात भर काम करोगे तो यही होने वाला है. कभी तो रेस्ट किया करो. आपका लैपटॉप ही आपके जैसा चल रहा है ऐसा लगता है. उसको भी एज हो गया. उसको थोड़ा मॉडर्न कर लो अभी. Sir, this is the recent laptop I have bought for this is a Dell G315. चलो आगे चलिए. Gaming one actually. नहीं आप उसका वो साइज वाला इंक्रीज करो. लेट इट कंटिन्यू एज इट इज. नहीं उसको मत करो नहीं तो फिर हैंग हो जाएगा. अच्छा ठीक है okay. This is my own 67 days. The standard deviations. Okay. What I start whenever this is an option. We are used to of we are used to 25, 124 and 256 days. These 67 days का क्या फंडा है? What is the 67 days? Sir, 67 days again I am telling you. I always use this 100%. I dissect it with 1:2. Even in my reverse trading actually, if at all whenever the profit has to be taken, it is purely based on equilateral triangle where all sides are equal. When it is a equilateral triangle, the 3 equilateral triangle, if you construct, then only you will get the pyramid. If you go 1, 2, 4, 8, 16, it is also something similar to the pyramidation, but it is a quantification actually. Okay. It is something like a quantification. Not pure pyramid means it has to be exactly all the sides has to be equal. So in that 100, I dissected 33 and 66, 66.66. That 66.66 cannot be made. Also, I am taking the next into that 67 days. That's all. Okay. And it works perfectly in this fashion. Actually, I have been making good amount of money. Okay, sir. Yeah. So here one sheet. This is the call sheet. CE call, where we have to react. This sheet number 2, this is PE, put sheet. Okay, sir.
Yeah, this the entire file I sent to the group. I put it in the WhatsApp. Okay. What I will do, I start with the call. Wherever it is. Just a minute. ये कॉलम की जरूरत नहीं है. हाँ, ठीक है सर. So I am saying actually यहाँ first 67 days का जो वो तो देता नहीं है. So whenever it comes, not it is not required that you should trade it only after 98 and all that. After 90% very well you can trade. Even 85% also you can very well trade. Okay. Since I am getting the first percentage 98%, what is my ratio? Whenever 98%, I sell 3 parts of the put. यहाँ पर select strike, everything is pure. We don't need which strike select करना, कुछ जरूरत नहीं. Select strike पे सब कुछ आ जाता है इसमें, ठीक है. So इसमें कैसे again you may ask how you are selecting 74. That also I will tell you. What is the percentage definition here? Is it percentage strength as defined by Pita? This is standard deviation. This percentage strength and all that actually Mr. Pitambaram has already put in. Same definition only. No? Okay. 20 same sir. It is actually a Excel sheet based formulas. Okay. Mr. Pitambaram used it for his equities for 25 and 64 to 125 256 124 whatever it may be. It works perfectly in equities. And the same percentage also in currency also it will work. But the thing is, we may end up with a very less number of trades. At the same time, we should not go for a more number of trades also. So it is a moderated one at the 67%, which I have backtested for several years. I am having 40 years data. So when I have backtested all this thing, this 67% it works fantastic. Even the 72 days also works. That I am using. I am now doing it for some other research purpose. So when it completed, that 72% I will introduce. Actually, it's all just to be towards the optimization of profits, nothing more than that. Okay. So when 98% comes, I am selling 150 put. Again, let me first say, why this 74? When the market is, when the USD rate is 77, you will ask, okay, here USD rate, this the column N is USD rate. You know, Umashankar ji, एक मिनट जो आपने percentage calculate किया है, this is on what basis? This is on the spot rate or future rate और कहाँ से आपको rate मिल रहा है? वही तो मैं बता रहा हूँ सर. मेरे को future का rate तो मिलता नहीं है. नहीं, ये future का rate तो मैं manually enter करता हूँ सर. तो manually हमको वो Excel sheet बनाना है और वहाँ से हमें percentage निकालना है. हाँ बस का वहाँ से अपने आप आ जाता है सर percentage वगैरह. मैं अभी इसके ऊपर एक मिनट, इसके ऊपर अभी हमारा लास्ट वेबिनार में डिस्कशन हुआ था, तो उसमें हमने ये देखा था कि जो बॉलिंजर बैंड है, बॉलिंजर बैंड के अंदर if we take the setting of 25 and 2 with the 3 Bollinger Band, then that matches exactly with your this percentage strength. 25 days का sir. So that is spot. The problem is PKG. That is, you get the percentage strength as per the spot. But Umaji's concept is the percentage strength has to be calculated from future. So he goes to Zerodha and then picks up that chart also. And also the percentage strength he calculates in Excel sheet. That is what I understand. Am I right? Yeah. Correct. Absolutely. What I would like to show here, you see, I am just, you see, this is open, high and all that low. This is not at all required. Only this rate is required. So every day the Zerodha account after completion of market, how much time we will take it just to put one rate. Only one rate. Hardly it takes just 5 seconds. So that much we have to do. कौन सा रेट लेंगे? कौन सा वाला? Close वाला? Close वाला rate, sir. Only closing rate. That's all. अच्छा, तो मतलब that means कि every day we have to update the closing rate of Zerodha. That's all. You only USD. अब USD INR का वो फरवरी का अगर ले रहे हैं तो फरवरी वाला, और मार्च का अगर कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं तो मार्च कॉन्ट्रैक्ट का रेट लेना है, बराबर? हाँ, मार्च कॉन्ट्रैक्ट का फरवरी जब तक चल रहा है फरवरी का डेली क्लोजिंग रेट यहाँ पर डालते रहने का. जो है ना, मैंने डेट डाल दिया ना सर, ये डेट है. कॉलम इज डेट. ओके. अच्छा. And I have given this open, high, low and all that for some other purpose which I am now developing for the intraday trade also.
तो अच्छा। इंट्राडे ट्रेड के लिए मैं ये सब मैं अपने पास के लिए रखा, अभी इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, इसका जरूरत ही नहीं है। ओके, I नहीं deleted रहने दो, it. कोई प्रॉब्लम नहीं, रहने दो, डिलीट मत कीजिए, डोंट नहीं, डिलीट just फ्रॉम योर सिस्टम। hide it. डिलीट हो गया तभी फार्मूला गेट एडजस्टेड, इट्स नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। मैंने वहां से एज इट इज दूसरी फाइल से कॉपी किया है यहाँ पर, और इसका कोई अच्छा। फायदा यहाँ नहीं है। तो ओके, व्हेन इट कम्स टू इंट्राडे, दिस ठीक है। थिंग विल प्ले ह्यूज पार्ट, सो दैट मींस कि because वी हैव टू जस्ट I'll be अपडेट, pardon? that means we have to just update the closing rate in the That's all. file, then it will automatically calculate my standard deviation, correct? everything, Yeah. everything, तो ये everything. स्टैंडर्ड डेविएशन है या वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन सा वाला है? Standard deviation on 67 days with the normal distributions. नहीं, वो जो Percentage पीताम्बरम जी बताते हैं वो कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करता है। Yeah, आई थिंक standard आपका भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, He's calculating normal distribution only. Normal normal distribution, sir. You mean, normal yeah, distribution. 8 year standard deviation, on that basis normal distribution. ओके, Column ओके, IJK. ठीक है, ओके, कैरी ऑन। उमाशंकर जी, एक क्वेश्चन था, ये अगर किसी के पास जीरोधा अकाउंट नहीं है तो ये क्लोजिंग रेट दूसरा कहाँ से ले सकते हैं? मनी कंट्रोल या और कहीं से ले सकते हैं? सर, जो भी आपका आप ब्रोकर है, जिस ब्रोकर के खाते में आपका अकाउंट रखे हैं, जिसके पास है, जो उसमें अगर इफ यू आर प्लेइंग इन करेंसी, शाम को 5 बजे के या 5:30 बजे के बाद आपको जो क्लोजिंग रेट मिल जाता है। नहीं तो एनएससी इंडिया से ले लो, एनएससी इंडिया में आता है ना रेट, एनएससी इंडिया में मिल जाएगा आपको। सर, you see, who is calling actually? My name is Rajul Singhal. Acha, Good Rajul evening, ji. sir. So if you happen to play currency, somewhere you will start the game, na? Yeah. When you start the game in that broker, you will get it, na? Otherwise, how can you start the नहीं तो एनएससी से ले लो ना, you can get from NSE also. Okay. Otherwise. Okay. Yeah. You see, if we really the gentleman starts the game, he has to activate the segment of currency, isn't it? As simple as Yeah. that. Yeah. Yeah, you will get that in there. Okay. Right. Okay. Yeah. Yeah. Please. So, उमाशंकर जी, एक डाउट है मेरी, एक्सपायरी डे दिन में 2 रेट आती है ना, फरवरी एक्सपायरी में वो तो 12 बजे खत्म हो जाती है, देन उस दिन हम फरवरी के लेना है क्लोजिंग प्राइस और मार्च वाला कॉन्ट्रैक्ट के लेना है। फरवरी का महीना जिस दिन खत्म हो गया, तो फरवरी का उस दिन का इट इज इफेक्टिव ओनली फरवरी, ओनली यू हैव टू टेक फरवरी, वेरी क्लियर। Next day we can take the March, because the actual execution of the contract is only on the next month, even though February will be closed and locked by 12 o'clock. Okay. तो फरवरी तक का लेना है, फरवरी में, और मार्च जाएंगे मार्च में, ठीक है? मार्च में लेना। There you will get advantage also and disadvantage also. When you are trading in call, you will get advantage. When you are trading in put, you will be in disadvantage. But when you are having a disadvantage, it will be a blessing in disguise, because you will invoke the reverse trading technique model also. So everywhere we will be having both the hand, we will have the laddu. Don't worry. अच्छा, जी सर, उमाशंकर जी, जस्ट थोड़ा अभी जैसे अपने इक्विटी के जो कॉन्ट्रैक्ट, इक्विटी के जो पुट एंड कॉल है, उसका तो मेरे को एनएससी से 1 महीने का हिस्टोरिकल डेटा मिल जाता है। अगर मैं कोई भी जैसे कॉन्ट्रैक्ट का दूं, मैं निफ्टी का दूं कि साहब आज से मैं जो पिछले 30 दिन का मेरे को हिस्टोरिकल क्लोजिंग रेट दे दो, तो एनएससी देता है। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने करेंसी में चालू नहीं किया है। अगर वो करेंसी में भी एनएससी दे देगा ना, तो आई कैन गेट 1 मंथ हिस्टोरिकल रेट फ्रॉम द एनएससी आल्सो। अनफॉर्चुनेटली वो एनएससी ने नहीं कर रहा है। एनएससी का अभी तो 2021 तक ही दे रहा है, 2022 का चालू नहीं किया उन्होंने एनएससी में। तो इक्विटी में यू कैन गेट दिस 1 मंथ डेटा फ्रॉम द एनएससी आल्सो। but actually, sir, from January 2020 onwards, I am having the real-time closing rate. So I can give it. Already I sent to the group. कल तक का मैंने दे दिया सर, आज का ही जो है ऐड करना है। अच्छा, हाँ, तो then we can update on everyday basis, right? क्या सर, 5 सेकंड नहीं लगता सर। Okay. Yeah, only sir, when we want to make some lakhs of rupees, इतना सो डेडिकेशन का फंड होना चाहिए सर। हमको हर चीज जो है ना वो प्लेट पे चाहिए, है जो रसगुल्ला। मेहनत नहीं करना चाहते लोग। Sir, that is not the thing actually, you know, sir. Actually, my mind frame has become highly tech savvy. That is the thing actually. It's not like that. Everybody do it actually. आप भी करते हैं, लेकिन क्या है ना सर, my frame of mind is different actually. I do it dedicatedly. आप लोग straight away tech के believe करते हैं, so I am far behind. तो आप टेक से वहां से इधर से मिल जाए तो ठीक है, वो मिल जाए तो नहीं, certainly I will also make use of it ना।
ठीक है, ठीक है, till चलिए, such अभी time, 74 till such. 74 का क्या करना है? हाँ, बहुत बोलिए। Sir, I will tell you, because you see, why this entire 74 है ना, because यहाँ पर 77 का भी USD रेट है, ठीक है, 77 का तो 75.5 होना चाहिए, ठीक है. So we don't know how the market will go. So first April, you see, in April actually, first day of the April contract, the mark, this is 75.10, okay. When it is 75.10, the ITM strike, I am clicking, just see, N63, this market rate minus 1.5% में दे रहा हूँ, 1.5 rupees दे रहा हूँ, ठीक है, minus. So it comes to 74, rounding off. So here I have taken it like that. I have put a class that it for the entire month. Yeah, this one and model is equal to F O63 and this thing. ये तो आप लोग को पता है Excel sheet में, ठीक है. तो the entire month we will play only on 74 strike, call and put. So what will happen? My main aim is to get 3 rupees. It is not a question of strike price. यहाँ पर मैंने थीटा इफेक्ट नहीं दिया, थीटा इफेक्ट में और भी ज्यादा प्रॉफिट आएगा. I am just showing on a pure arithmetical basis without giving the theta effect. Okay, but when the theta effect comes, it gives more profit normally. Okay, if due to some currency which whatever it may be, if the premiums are very high, we will end up selling more RTTM, double the quantity. In every way, we will counter the market and make huge money. You RTTM on 3 occasions I did it for the entire 25 months. You will see that. So I'll just show you. So it has been like that. Now let me start the game. You see, 16th April only yes sir. Someone? Only my request is that, sir, in order to maintain continuity of the presentation, without any interruptions, you can continue. I hope others also would agree. Yeah. I'm okay for it. I'm okay for it. Okay. Yeah. Question and answer last. Yeah, question. I prefer that. Actually, I can request members actually jot down as much as question as much possible. Actually, please. Actually, I would like that all the brains try to corner me. The more I am being cornered, the more I'll get ideas. So I have muted everybody. Now nobody can unmute during your presentation. So you can continue for 1 hour. Then I will unmute everybody. Then they can start the question. Now nobody can unmute. Okay. Fantastic, sir. Fantastic. I want as much as number of questions. More number of questions will satisfy me. So I request everybody to actually just put me under the carpet. Just flat it actually. A lot of questions, because from the questions only I create further ideas. Sir, 98.08 on 16th April. So I have not got anywhere. So 16.98.8%. I sold 3 pots of call. Okay. I never see anything. Moment I see this more than 85 or something like that, blindly I sell. कुछ नहीं करना है, ठीक है? Exactly straight away 16th April I am going to sheet number 2. इसमें भी मैं नाम चेंज कर देता हूँ. Call put करके call हो गया, ठीक है? So here I go to put, I go to 19th April. कौन सा April सर? ये है 16th April. Okay, 16th April. See here, I short. This is -3. Please don't ask minus why it is -0. There is no such -0.3. Agree. That means this is, since I did it on arithmetical basis, actually cannot be -0.3. It will be very less. 10 paisa या 5 paisa रहेगा last. ठीक है जी, because it is a put. So put, when the call is at 98%, put will becomes almost 0. So I shorted 50 lots here. Okay. Now wherever we have sold more, again we have to concentrate on that area only. Now I'm going back to call.
Every end of the day, we have to close it. In between, we don't need to check everything, what is going on and all that. We will forget about it. Okay. So you see, this is the April end. Next day is May. So April, I simply covered it. 3 रुपया 3 पैसा में बेचा, 1 रुपया 92 पैसा में कवर कर लिया. So I have closed that contract. No question of your transferring this rollover, nothing. Every month contract, उस दिन का अपना जो है आटा लिया, चपाती बूंदा खाया, finish, हो गया. Cool. So now you see, I am going to that 29th April on put side. This is 1 rupee 8 paisa loss, no problem. I covered it. I booked the loss. Now, since I work more on call, I am going to the call only. The market automatically will give the directions. You see now. Again, I shorted. You may ask why. Percentage is 85% के ऊपर claim काम करता हूँ, but 84% फिर भी ठीक है. Why फिर भी ठीक है? If at all the selling premium is more than 1.92, okay, then one more thing I will show you. When I sold here, this USD rate is 75.92. Since this is a call, we have to see the higher target. 77.67, if it is breaks on the upside, we have to invoke the reverse trading technique. Here it has not broken, it is going down. ठीक है, ऊपर आएगा तो naturally यहाँ तक ऊपर ही नहीं गया, नीचे ही है. So it is coming down. Percentage strength, it is coming down gradually. From here 90% to it has come down to 84%. Whereas the premium has gone up 2.03. So I have sold 1.50. Again, I would like to show this is the sum total of the premium call and put will become, has to be 3 rupees. You just see, because I am not getting on the rate, since I am rounding off here, I am getting it through the premium. You see this now 6th May 2.03. I am going to the 6th May. $97. So combined together is 3 rupees. Always I will get 3 rupees. So now I am going back to call. So this 6th May, I am selling 6th May, I am again selling it because these two parameters more than 80%. And the premium is also more. Everywhere I will be making the money. 1 or 2 months actually I have to incur loss, but doesn't mind actually. See 1.92 को मैंने खरीदा, उसी को मैं आगे बेचा. Okay, so minus 150 again 6th May. I'll show you here. 97 को मैंने यहाँ बेच दिया. इसमें नीचे आएगा. Whenever you put to sell, you cannot. It's quite next to impossible actually to sell the put on the higher value. 90% you have to sell on the lower value only. So I have sold it because there I have given a cushion. So what will happen to that? We will go there. May end. I am going to the May end. Which में देखता ही नहीं है. End of May. 1.6 I have covered it. Same like that. Here also I covered it. Yeah, May. In this May I covered. This is a huge loss. 0.97, 1.35. Never mind. I have covered it. So again I am going because I have made 150 वहां पर, जहां पर volume ज्यादा, you have to concentrate that. Cover कर दिया. Then उसके बाद मैं कुछ नहीं किया because ये सब चल रही है बीच का. So even though here also we can do, it is not necessarily, it is not mandatory. We have to keep quiet between the 80% to 10%. We can do that, but we have to use the chart. If the person is expert in chart, you can make use of the between the 80% to 10% also. There is no hard and fast rule. You should not play. You can play very well. For that learning and for the beginning and for the beginners, I am giving this, but I use the charts also. Okay. Now that is, it will be a very, very complex then. So that I am trying to bring it in this Excel sheet itself so that the members will not have any problem at all. That may take some time. Till such time,
just bear with me and to show actually in between there is no percentage. I am not reacting. Okay, sir. Now again I am going. ये percentage trend चल रहा है, ठीक है? I am just keeping quiet. यहाँ पर 1% दिखा, 1% दिखा तो मैंने पुट बेचना, इसलिए मैं पुट में चला गया 1%, 127 परसेंटेज 1% है, मेरा अलार्म स्टार्ट हो गया इमीडिएटली 2.22, कुछ नहीं देगा, 150 बेच दिया, ठीक है जी। फिर यहाँ पर मैंने ज्यादा वॉल्यूम, आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन हियर। तो कौन सा महीना? जुलाई। ओके, जुलाई अगेन गोइंग टू द एंड ऑफ द जुलाई, क्लोज कर दिया 10 बजे, मार्केट वो 9 बजे ओपन हुआ, 10 बजे तक क्लोज, 9, 9:05, 9:10, जैसा मर्जी। Before 10 o'clock it will be always best because nearer to the 12 o'clock the premium will be very very high. You lose the profit. 9 बजे को ओपन हुआ, 9:30, 9:15 तक फिनिश करो, बढ़िया है, तो आपको मिल जाएगा 2 रुपए के नीचे भी मिल सकता है। नियर टू दैट 12 o'clock तक 11th hour preparation always costly, ठीक है सर। So what I did, I covered it. So there also I am now going on only one stage, one side. The other side automatically, you people please assume that has already been covered. Okay, so that we can do and give more time for the question and answers. So like that, then again I am going 73 में कुछ नहीं गया, यहाँ भी आया 066, I can play, ठीक है, I can very well play. So but I am taking it here because this is 74.16. If it is 74.16, actually I can very well do it actually. Only thing is I have to go for the RTTM. For a conservative basis, I am taking this 73.16. So minus 150 I have sold. Okay. So what it shows? September is going on. 2.07. You see, 2.84, then 2.07. I booked the profit. Done. ठीक है सर. Then because this is closing, यहाँ पर 6% तक मैं जा सकता हूँ, but the month is already closing ना, September 20, so I have to close. There is no choice at all. I cannot able to take this juice. So मैंने क्या किया, 6% आ गया, तुरंत मैंने क्या कर दिया, पुट को बेच दिया। नेक्स्ट मंथ तुरंत नीचे बेचा, बट इट इज 6%, सो मैक्सिमम क्या जाएगा, नीचे 6% जाएगा, जाने दो, आई एम रेडी फॉर इट। ओके, व्हाट हैपेंस, जस्ट सी, अक्टूबर क्लोज्ड, कवर कर दिया, so I covered it, that's all. There also exactly 50 covered के, I will show you. So 190 and 208. $190 sold exactly same place. 208 covered, done. So what I did, then again I am moving around. Just let me see. Let me go to put, because put was having the higher volume. Okay, what I did, 208 मैंने cover कर लिया, 213, go to call. You see, again it is coming now, suddenly it jumped to go more than 85%. मुझे चाहिए 80%, that's all. ठीक है, 85% चला गया, nothing. Immediately मैं यहाँ पर 150 बेच दिया. Which month? November. So when I sold this November at 150 on 4th November, then the end of the November I am just coming and I closed it. That's all. There also I closed it. Okay. Then again I am going down. You see, it is 6%. That means go to put side. Don't stay here. So I have gone to which serial I tell you. 251. That is on 31st December. ऊपर नीचे कोई बात नहीं, 1.73 में बेचना, हायर वैल्यू में, सस्ता में बेचना,
let me be conservative actually, but I am supposed to sell here. ठीक है? But I am selling it here, no problem. तो थोड़ा प्रॉफिट में नुकसान ही है, कोई बात नहीं. ठीक है, मैंने यहाँ भेज दिया सर. January. So the end of the January I am going. So here I am booking the loss. 150 I am booking the loss because I am selling at 1.7. I am closing at 2.19. No problem. So just see. More than 10%, I am not playing. Again, suddenly it jumped to 95%. Again, I am selling 95. This 150 I am selling on 26 February. Okay. So there in the call I have sold already 50. Now you just see, this is the place. You see where I have sold 74.19 on the put side. When it is put side, you have to see the downside target. Downside target is 72.92. If it goes down further, just to mitigate the loss, which I sold. Now my reverse trading. अभी मैं ब्रह्मास्त्र यूज करता हूँ. मैं करूंगा ब्रह्मास्त्र. Reverse trading technique. Sell twice the cumulative quantity. You have to sell. That is a ब्रह्मास्त्र. ब्रह्मास्त्र यूज ही नहीं होता है. एक बार मैंने यूज कर लिया. क्यों? जब ये 74.19, my next target says ready for it 72.92. If it breaks, sell twice the cumulative quantity. So where it breaks 72.90, इधर ब्रेक हो गया सर. ठीक है, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ डाल दिया. बात तो एक ही है, क्योंकि मैं हायर वैल्यू में बेच दिया. इसमें भी बेच सकते हैं, इसमें भी बेच सकते हैं. It makes no difference actually. So what I said, I have sold 300 because my cumulative quantity is 150 previously. Because there is no every month I am closing only the last traded entry will be my cumulative quantity. I am selling 300 now. Okay. When I sold 300, it all happened in the March contract only. So it is going like that. Just see end of the month. End of the month March contract, I am covering the entire 450 thing. Live in the present. I never bother about the past. I never bother about the future. Live in the present. इस महीने के कर दिया, लॉन्ग या शॉर्ट खत्म करना है, फिनिश करना है. दैट्स ऑल. ठीक है सर. 450 मैंने कर दिया. नाउ अगेन आफ्टर गोइंग सडनली टू 87.97 हो गया. मुझे आगे का नहीं मालूम है. आगे का 99% 99 सब बढ़िया बढ़िया फिगर है, लेकिन आई डोंट नो ना एग्जैक्टली वेयर इट विल गो. ठीक है. सो व्हाट आई डिड, अप्रैल में 87.9 मार्च खत्म. तुरंत अप्रैल में एक फ्रंट मैंने ओपन कर दिया 1.45 का. मैंने यहाँ पर नहीं, ये हो गया, क्लोज हो गया. यहाँ 50. यहाँ देखते हैं कॉल में. एक मिनट, कॉल में बेचना है ना, बिकॉज 87.9% मीन्स हाई साइड. सो आई एम सेलिंग 87.97 हाई साइड. विच एरिया? 312. 87.97. I immediately shifted back to the call side. So call side, immediately I sold 150. Okay. Now again the reverse trading. Second time now I am using 73.355. What the target says, if you cross 74.80 target rate, sell twice, whatever be the premium. You should not see the premium, nothing. इतना जो 5 पैसा 10 पैसा भी है, आप बेचो, आपको मिलेगा. कहां पर अभी का ये टारगेट 74.80 क्रॉस हुआ? आई जस्ट शो यू. यहाँ क्रॉस हो गया सर. ठीक है. उसके नीचे भी है, 75 भी है, बट वी डोंट नो ना. आई एम सिटिंग हियर ऑन 8 अप्रैल. आई डोंट नो व्हाट विल हैपन टुमारो. सो फर्स्ट क्रॉसिंग मैंने 300 बेच दिया सर. ठीक है, बेच दिया. तो वहां कुछ नहीं करना. पुट में तो ओनली 50 है तो 50 ही है. जिस जगह लॉस है वहीं पर ही रिवर्स ट्रेडिंग यूज करना है. जहां पर जो है वहां पर फर्दर कुछ नहीं करना है. तो उसके लिए भी एडजस्टमेंट एंट्रीज है, दैट आई विल टेल यू. उसको अभी जरूरत नहीं. सो आई सोल्ड इट अप्रैल. कमिंग टू द एंड ऑफ द मंथ क्लोज्ड दिस कॉल एंड पुट बोथ वे. आई विल क्लोज इट. ठीक है. So 2.40, wherever it is, whatever I get the benefit, I will close it. There is a differential between this and all that. Na? This will get factored into the overall amount what I have sold here. So it automatically by default, it will take into the profit mode only.
So I have sold it. Then again, अगर start करना है तो 450 ही minus में start कर सकते हैं, but I contain the volume. This is a simple version. I just blindly go by 150, 50. If at all it is required, higher. That's all. Simple containing of volumes. तो हो गया ये 88%. ठीक है सर. तो 88% आ गया क्योंकि यहाँ पर अप्रैल क्लोज हो, उसका नेक्स्ट स्लॉट अवेलेबल इज ओनली ऑन मे ना. सो 88% आई हैव टू सेल. मैंने ऑलरेडी बोल दिया ना, 85 के ऊपर आप बेच सकते हैं, इवन 80 के ऊपर भी बेच सकते हैं. 85 इज लिटिल बिट सेफ मोड. दैट्स 99 and all that not required at all. Only the starting game you require 99, say 90 plus and below 10. That's only for starting. If at all, if it goes after selling, if it goes beyond 99, we have to assume that it's a blessing in disguise for us, because we will have a opportunity to sell more. Normally it never happens. Only 2 occasions, then 1 occasion, 3 occasions. We are not that much fortunate enough. The more you get the notional loss, the huge return you will get it in currency. Because Chacha baithe hain RBI governor. Hamesha at the back of the mind, we should remember. RBI governor Chacha जाने नहीं देगा कुछ लेवल के ऊपर, जाने नहीं देगा कुछ लेवल के नीचे. So that always we have to keep it in mind, because our country's economy's balance of payments will get affected. So, and the government and finance and RBI, these people will not allow anybody, including the SEBI, will not do any cartel, and if they do it, they will be the first people will die. So all the cartels will play around with equity. वहां पर nobody is there to support. Whereas in this currency, nobody can able to play around with the currency. जितना वित्त उन्होंने सोच लिया इस साल का, इतना ही वित्त आगे आप पीछे जाने देना है, उससे ज्यादा वित्त जाएगा ही नहीं. उसी के अंदर ये लोग प्ले करते हैं. वो बड़े बड़े लोग जाते हैं, हम उसके पीछे छाया बन के पीछे पीछे धीरे धीरे जाना है, जितना हो सके लूटना है. Simple fact, that's all. So what I did, you see, first opportunity, I boarded the first flight. So 150 sold May. So I'm going to the end of the month. Closed. Minus 36 closed. That means इसके साथ ही आएगा 137 plus 36. इतना ही मिलेगा. Actual में premium if you go see, and you will get that much premium, because theta effect मैंने नहीं किया तो 5 पैसा तक यहाँ पर खत्म हो जाता है. 5 पैसा. So you will get the full amount. ठीक है. So again you just see closed. So यहाँ कुछ नहीं है. 21% and all that. वहां पर कुछ आ रहा है. Actually see 182. Why? Let me go to put. If you sit on the lap this broker's terminal, Zerodha में सब कुछ आपको पता चल जाएगा. 345 I am going. Yeah, this I am doing it because whenever I trade in the things, I see the 52-week high low also. 52 ka is somewhere around 72, 80, 72, 30 and all that. It's all 52. It is near low, very near to the low. So those things also, if we keep it in our mind, we can take very well the risk. We don't need to wait for that 0%, 10%, just to showcase this. I have taken this 21.68%, which actually I am not supposed to do, because if our thinking correct, if sync with all these parameters, 52 high कौन सा है, low कौन सा है, low की अगर 10%, 15% के अंदर ही है, even that standard deviation percentage, normal distribution, even if it is beyond any percent, there also you can take risk. In that case also, I would like to showcase this model will help you and it will work. ठीक है सर. तो मैंने जून में बेच दिया उठा के. Closed. June ka closed. So you see, you will get it, because this is 52 week low. 52 week low के आसपास है, तो naturally उसको ऊपर चला गया. चलेगा क्योंकि there are some things actually, ways and means actually, since RBI is following, 100% ऊपर आएगा, at the most के नीचे जाएगा, जाने दो ना.
but I am not lucky. तो आज तो cumulative quantity खरीद नहीं पा रहा हूँ, पैसा ही दे दिया, कोई बात. So I have closed it. Okay, done. Here it is going 91%. So 91% call में चले जाइए, straight away call. 371. 91, 83, 84, anywhere you can sell it, sir. It is not mandatory. 80 को 83 को ऊपर भी बेच सकते हैं, 84, 89. What is the rate? Because these are all low, going around 74.50 to 74.91. Anywhere you can say, you can ship this here, you can ship this here, anywhere you can do. Because more than 80% very well you can do it. There is no hard and fast rule. Only thing is near 91% आ गया, तो ऊपर जा रहा, ऊपर ही जा रहा है. Then I thought the market, because seeing the chart also it is going up, मैंने थोड़ा सा मेलेज ले लिया, इससे ज्यादा नहीं. ठीक है. If those people couldn't be able to just interpret the chart and all that, blindly they can go by this. Just with this Excel sheet they can very well play. ठीक है. यहाँ तो ऑलरेडी सब माहिर है सर चार्ट में. नेचुरली वो तो मुझे मालूम है, मुझसे ज्यादा और प्रॉफिटेबिलिटी स्क्वीज करेंगे वो. ठीक है. तो 91.92 आई सोल्ड 150. दैट इज जुलाई कॉन्ट्रैक्ट. कुछ नहीं, लास्ट डे जा रहा, सुबह 9 बजे खुला, 5 मिनट में क्लोज करके बाहर आ गया. ठीक है सर. नाउ सर आई विल गो टू द एंड ऑफ द गेम स्ट्रेट अवे. दिस इज द पैटर्न आई एम फॉलोइंग. ठीक है. थोड़ा सा मैं करता हूँ, इफ देयर इज एनी रिवर्स ट्रेडिंग आया, रिवर्स ट्रेडिंग कुछ नहीं, ऐसे में जा रहा, ऐसे जा रहा, सो दैट आई लीव द फोरम टू द क्वेश्चंस. यहां तक आ गया. नाउ कम्स टू द क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी. नाउ आई शो द प्रॉफिटेबिलिटी. Here you are making, whenever the cumulative quantity is 0, here it comes in the minus value, that's all. But this is not loss. 8,10,000 rupees. Okay. In the call side, what happened to the put side? $5,51,000. ठीक है सर. So 13,65,000. Okay. Now what is the money, amount of money we have to keep with the broker? That is that will find out the profitability. Okay. Now I'll show you. Minus figure, naturally that is including M2M loss. Just note down 11,71,000. Okay, I am putting it here somewhere. This is the total amount of money we have to keep with the broker. Okay, now let me see, 11,71,000 I am keeping. Okay, which row? I would like to know which row. This is row number 309. Okay, 309 में मैक्सिमम मेरा जो है, लेकिन ये 309 में व्हाट इज द पोजीशन एट द कॉल. 309 रो में मेरा पोजीशन कॉल में क्या पोजीशन है. ठीक है, वो मैं जा रहा हूँ 309. Because that is exactly the this is whatever the profit, whatever be the margin along with the capital, you have to setting of the profit and loss, you have to keep with the broker. Okay, so I am going to the 309. Sir, 309, my gain is 3,03,000. I am taking a margin 1300 था, मैंने 2000 ले लिया, ज्यादा ही लिया. ठीक है, बहुत ज्यादा ले रखा है, कोई बात नहीं, for safe side. So still I am left with the 2,03,000 with the broker, which I am not supposed to. So 2,03,000, say 2 lakh, I am reducing it.
9,71,000, whereas my profit is 13,65,000. Profit percentage for 2 years. Into 100. This is 71.13. I am presuming this entire 9,71,000, I am keeping it for the entire year. But again, I am coming. You see this. The pipeline money getting decreased actually here. When the pipeline money getting decreased. So if you take, for example, let me come out of this actually. When this percentage yield will be much more than the exactly showing, because I am presuming here my entire 10 lakhs I am keeping it. Okay, so what happens? For in a year, your amount will be almost get double, more than double actually. It becomes more than double. So this is the how it works actually, but without any stress, without any tension. And if we mix the chart also, and it will be much more powerful than what we do by simply following the standard deviations. Any questions, sir? Kothari ji? I have to unmute a minute. Yeah. I have to unmute everybody. Okay. Now I unmuted everybody. Anybody can unmute and ask questions. Sir, one question. Yeah, just a minute. Just give me a few minutes. I will just delete all these columns because unnecessarily I am. It is waste text. ठीक है, रहने दो, कोई इशू नहीं है सर. वो 1 सेकंड नहीं लगेगा सर, ताकि मैं बार है ना. अच्छा, ओके. सर ये स्टार्ट किस साइड से करना है, कॉल साइड, पुट साइड? नहीं, बेसिकली नहीं, उसके पहले तो अपना ये इशू आएगा. आपका जो लॉजिक है वो ये है कि हमारे को परसेंटेज स्ट्रेंथ चेक करना है, और परसेंटेज स्ट्रेंथ अगर वो 85 के ऊपर अगर आ रहा है तो कॉल की मुझे 3 क्वांटिटी बेचनी है, पुट की 1 क्वांटिटी बेचनी है. और अगर वो 0 आ जाता है और 0 आ जा रहा है तो मुझे पुट की 0 साइड में आ रहा है तो पुट की 3 क्वांटिटी बेचनी है, कॉल की मुझे 1 क्वांटिटी बेचनी है. करेक्ट? सर स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेना है? और स्ट्राइक प्राइस जो है उन्होंने एटीएम कैलकुलेट किया है, जो मुझे दिख रहा है कि जो प्राइस था उसका 1.5% कम किया ना आपने. कितना कम किया था? 1.5 रुपीस. 1.5 रुपीस माइनस करके उसको राउंड ऑफ कर दिया आपने. और आईटीएम बेचने ऑप्शन हमारे को आईटीएम बेचने, बराबर है? बिल्कुल. बट अभी इशू ये है कि आईटीएम में इतना लिक्विडिटी है क्या आपका? सर आईटीएम में ही लिक्विडिटी है, करंट मंथ में हेवी लिक्विडिटी. आई एम नॉट गोइंग फॉर द नेक्स्ट मंथ और फॉर ऑफ मंथ ना. अच्छा, फिर आपको रोल ओवर करना पड़ेगा तो उसमें आपको क्या कॉस्टिंग आएगा? सर रोल ओवर, आई क्लोज द चैप्टर, यू डोंट नीड टू रोल ओवर. अभी मैं आपने देखा ना, इज देयर एनी नॉट कैरिंग फॉरवर्ड एनीथिंग. नहीं, आप तो एक बार तो मई से जून में गए थे, आपने जून में जाके उसको नहीं अगेन ही टेक्स अ न्यू डिसीजन बेस्ड ऑन हर महीने closes this position in at the month end. Month end position is closed. Sir, एक क्वेश्चन है. Position is always closed. Only thing is that in case it crosses the target value, he does the double transaction. Double Brahmastra reverse trading technique. That's all. सर एक क्वेश्चन है, आपने मार्च 21 के अंदर if you go to the put sheet on row number 290. Yes, going. Short position. Just a minute. 219. 290. इसमें एक और एडजस्टमेंट एंट्रीज वगैरह कर सकते हैं. दैट आई विल टेल यू आफ्टर दिस क्वेश्चन एंड आंसर फिनिशेस. एक्चुअली इफ समवन वांट्स टू use it, but normally I don't suggest. Actually, rather I'll increase the volume on the call or put side. So you have taken short position on the put side while the percentage strength is 95.37. So you should have taken short position on the call side, no? Just a minute, sir. Just a minute. 1 minute. मेरा क्यों ये नहीं आ रहा है?
290 ना सर? Yes, sir. Yes, sir. 290, 95%. Okay. So you should have taken the short position on the call side, not the put side, right? Yeah. Just a minute. जाओ. नहीं वो होगा ना उधर भी कॉल साइड 3 टाइम्स होगा पोजीशन सर. हाँ 290 में देखिए. नहीं 290 में नहीं सर होगा उधर 3 टाइम्स होगा. नहीं कोई वहाँ भी 95 है. हाँ यहाँ भी 95 है. तो यहाँ पर 95 है. We can actually we are supposed to short only here 150. This I missed it. I don't know how I missed it. We can short it straight away. I will start it. I will change the position that. So it will give only more profit. वो नीचे जा रहा है ना? मार्केट नीचे जा रहा है ना सर? Yeah, sir. तो वो मैं वही मतलब I was thinking that कुछ और. No, you are right, sir. Really, I am very happy to know the numbers are very sharp. Excellent, sir. ये हमारे एल्गो एक्सपर्ट है भाई. एल्गो एक्सपर्ट है हमारे ये. विजय, राकेश विजय. ये हमारे एल्गो में. मालूम सर. मालूम बिल्कुल. यहाँ पर 8% के पास sudden jump to 95% one day. I don't know how I missed it actually. So नहीं, लेकिन ये तो मैंने किया है सर. हाँ नहीं कर दिया सर. वो क्या है मैंने यहाँ पर ही कर दिया -50. तो -50 तो उस दिन तो 8.13 था आपका रेशो. सर एक मिनट नहीं करना था. एक मिनट. तब भी मुझे फायदा दिया. अभी मैं इसको मैं कट नहीं कर रहा हूँ. ठीक है देखिए. बिकॉज प्रीवियसली इट वाज 0. माय क्युमुलेटिव क्वांटिटी इज 0. ओके. आई एम सपोज टू ये फरवरी को मैंने मार्च में स्टार्ट हुआ तो मार्च में 8%. तो मार्च में 8% आई एम सपोज टू शॉर्ट. ठीक है. तो 8% में शॉर्ट करेंगे ना सर. कॉल सर एक मिनट 150 and call will be 50. Correct. Because today I am sitting on March 25th February on the March contract. I don't know tomorrow will go to 95%. Do anybody knows? No. नहीं बट आपका लॉजिक तो ये बोल रहा है ना कि जब आप 80 के ऊपर आएंगे तभी शॉर्ट करेंगे 3 टाइम. सर एक मिनट सर you first to assume you are sitting on 25th February 21. ठीक है. That is the first day of the March contract. Sir, I will not take the trade. सर एक मिनट मेरी सवाल का पहले आप पूछने दीजिए. आप जवाब दे दो उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ. सर you are sitting on 25th February. Am I right? Right. At that time, end of the day or in the morning, anywhere in the time, if you put that closing price, it will show 8.13. Correct? March, you have to take the contract. After February closing, you have to take the contract. 445 I am keying in 8.2 उसको closing rate में डाल रहा हूँ. 8.13 आ गया. ठीक है. जब 8.13 आ गया, you have to short 50 call and 150 put. So that is the reason. एक मिनट. Sir, मेरा actually what I said, whenever you see less than 10%, sell 2 put, 3 put, and sell 1 call. बताया ना? I never change the rules. Rakesh, you got it? नहीं तो फिर आपका उस दिन एक मिनट सर. कितना स्ट्रेंथ है राकेश जी गो टू पुट शीट. राकेश जी पुट पे जाओ ना आप. नहीं राकेश जी, will you agree with this? Yes sir, but sir मेरे को एक डाउट है कि ये जो अपन ने -50 यहाँ पे किया रो नंबर 289 पे, ये हमने इसलिए किया क्योंकि ऊपर हमारा रो नंबर 269 के ऊपर +50 था. तो हमने ये जनवरी वाले को क्लोज करने के लिए किया यहाँ पे. आप नो जनवरी ऑलरेडी क्लोज ना. फरवरी ऑलरेडी क्लोज. ऊपर जाएंगे तो जनवरी वाला देखिए प्लस में है. सर जनवरी यू सी जनवरी क्लोज ना. अच्छा ये जनवरी का क्लोज है. ओके ना सर. तो माइनस ही करते हैं है ना. हर महीने करते हैं सर. इसमें एक डाउट है. आप एक चीज तो बोल रहे हैं कि वी हैव टू नोट द क्लोजिंग पोजीशन. दैट मींस वी आर गोइंग टू टेक द एंट्री नेक्स्ट डे. Not necessarily.
if the सेम डे भी value- कर सकते हैं सर. यू कैन टेक, अगर 12 बजे क्लोज हो जाता है ना मार्च या उस करंट मंथ का, उसी टाइम नेक्स्ट मंथ का इफ यू आर इन ए फेवरेबल पोजीशन, डू इट. Okay. Which I am going to, you see, I am going to put a heavy volume. I am going to put my execution orders actually screenshot in the group, all the groups. So you tell me, आज सर अभी मार्च आज खत्म होने वाला, you take the April contract straight away. I will obey your orders immediately. I will sell my volume and I will put a screenshot. That's all. It is immaterial for me. I don't need to wait up to next month or next day to open and all that. आज पहले इस करंट महीने का खत्म करो कहानी, ठीक है सर. It's true. खत्म करके 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, शाम तक you can execute the next month contract. फॉर्मूला कुछ गलत है क्या? ये तो 95% सडन जंप कैसे करेंगे? No formula corrupt. This is the manually entered figure. Why you see, you may know that the December 17th, this currency was shoot up by more than 1 rupees. Every currency has shoot up. Okay. मुझे आगे सर प्रॉब्लम क्या हुआ, मुझे कंफ्यूजन क्यों हुआ? अगर आप पुट वाले शीट में जाएंगे रो नंबर 290 में, तो बेसिक वो जो एंट्री -150 290 पे है, वो 290 की जगह 289 पे होना चाहिए था. Correct. I agree. You are right. You see, I am removing it. ठीक है. Yes. अब मैं सस्ते में बेच के फायदा नहीं उठा रहा हूँ, बट मैं अभी महंगे में बेच के मैं फायदा उठा रहा हूँ. Absolutely, क्योंकि ये 8% है, तो मुझे ये पता नहीं है कि अगले दिन 95 होने वाला है, तो 8 है, तो इसलिए मैंने पुट बेच दिया. बिल्कुल सर, टोटली अंडर. ना अब ठीक है ना सर, अब ठीक है ना. परफेक्ट सर, परफेक्ट सर. This is called the old age syndrome. So young chap like Rakesh Vijay and all that is there. No, why should I worry about it? They will take care of me. We can do, Rakesh, I know that he is doing Python and all that. If you want, Mr. Rakesh ji, you can sit with me. You can call it anytime. We can do in the interest of the group without charging. I am giving my brain. You have to उमाशंकर जी आप देखिए सर, एक मिनट सर, कोठारी जी. So I am giving my brain. I expect Mr. Rakesh Vijay to give his brain in the interest of the group without any charge. If he is ready, I am ready to cooperate with him. Today and further. Sure sir, definitely. नहीं, आप ये देखिए 288 में आपका प्रीमियम है 2.71. ठीक है. 288 में, और आपका 289 पे आपका प्रीमियम हो गया 1.28. हाँ, वो नहीं कर सकते हैं ना सर, वो मार्च वो फेब है ना सर. हाँ, तो बराबर है. तो आपका माइंड तो ये काम करेगा, कल तो इसका प्रीमियम 2.71 था और आज 1.28 है, उसपे मैं शॉर्ट कर रहा हूँ. सर मैं कल का मैं सोचता ही नहीं है सर. यहाँ पर थोड़ा सा गलत एंट्री हो गया तो सोचता ही नहीं है. अभी मैंने अभी तक दिखाया ना, कभी सोचा नहीं, सोचा मुझे नहीं मालूम ना कल क्या होने वाला. नहीं, प्रीवियस डे was 2.71 and current day is 1.28. और बाद में आप शॉर्ट कर रहे हैं. सर previous day you see one, previous day is closed. There is no cumulative quantity. Why I have not taken the position? चलिए ठीक है, some confusion है. We'll go to the next one. ठीक है, okay. पोजीशन लिया ही नहीं. कुछ प्रॉब्लम हुआ है. No problem at all. Before we proceed, I am a novice. The question may seem very basic and elementary. What I have understood is, if the percentage is 35% or more, then we sell 3 calls and 1 put. Am I right? If the percentage is 85% or more, absolutely right. 3 calls and 1 put. 3 calls and 1 put. And if a percentage is say 10% or less, then less we than, reverse single it. digit, no 10%, less than 10%. Of course, okay. For paper trading, you can do it and try it on 10% also. Okay, less than 10%, then we reverse it and we sell 3 puts and 1 call. Absolutely. Jay, right. Okay, thank you, sir. Yeah. So same thing can be used in equity also? Same thing can be used in equity also? Sir, equity mein, strike price, everything is already been calculated. Select strike price. ये जो लिखा है ना sir, column Q. Select strike price, orange color में. This is orange, beautiful orange. Vitamin C. Vitamin C मैं इसलिए use कर रहा हूँ sir, because in orange vitamin C for cash also. We want a lot of cash. We are already retired actually, because we are all in a waiting list. So you share the Excel ना? Sir, मैंने already डाल दिया sir.
अच्छा सर, थैंक यू सर। सब ग्रुप में डाल दिया। सेलिंग स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कैसे करने का? एट द मनी? या नो एट द मनी सर, you just select the strike price. By default you will That go is in the money, ITM. ITM in the money. ITM, okay, You okay. just has to उस महीने का 74 Deep- कॉल deep और in the money. 74 पुट, बस खत्म सर। 74 यहाँ पर पुट है तो यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस शो करेगा। सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट इट, दैट्स ऑल। अभी कॉल में जाएंगे तो आपको 290 में दिखेगा कौन सा जो है 71, सिंपल सेलेक्ट स्ट्राइक प्राइस। सर लेकिन जो प्रीमियम दिख रहा है वो तो एग्जैक्ट डिफरेंस है, मतलब एग्जैक्ट डिफरेंस 74 माइनस 72.72, तो वो प्रीमियम तो बिल्कुल कोई थीटा डीके नहीं है उसमें। कौन सा सर इसी में 1.72 इज द प्रीमियम। ओके, यू आर टेलिंग कि वी हैव टू टेक दिस 71 and 72.72, so you have not taken this theta decay, I think. Theta decay, that's what I am telling. This I have not taken. This is pure arithmetics I have given. If the theta decay also come into play, certainly, no, sir, you will get more profit. Because three times you are selling, na. Here also will theta decay will come. Where you have sold 50 lots, there also some theta decay will come. At least it will abstain from this theta decay. At least it will stand. At least there. So ये रेट आपने क्या एक्चुअल रेट लिया है? ये क्लोजिंग रेट ये जो डिफरेंस है ना, फैंटास्टिक क्वेश्चन। बिकॉज़ आईटीएम में तो सर थीटा इज वेरी लेस, नेग्लिजिबल होता है आईटीएम व्हेन वी आर प्लेइंग विद आईटीएम। सर अभी आप देख रहे हैं ना सर, नेग्लिजिबल में इतना प्रॉफिट आ रहा है तो बहुत बढ़िया हो गया, तो कितना प्रॉफिट आएगा? These are all real time rates. Okay, these are already loaded. These are already loaded in our group, all the groups. You can go and verify individual rates, tick by tick. Okay. सर डेली एंट्री कौन सी वाली करनी है? Only closing rate. Only closing rate. Sir, हाँ, वो एक बार दिखाते हैं, लास्ट में दिखाते हैं, वो आज की करके दिखाते हैं सर। आप भी करते हैं सर एक? हाँ, ताकि सबको पता लग जाए। आप भी जरोडा का क्लोजिंग रेट आप बता दीजिए। मैं अभी 2 सेकंड में बताता हूँ। 2 सेकंड मैं ऑन कर रहा हूँ। Till such time, let me remove all these unnecessary sheets. Actually, it will reduce our time frame. Just a minute. वो जरूरत नहीं है actually. अच्छा 3:1 का क्या लॉजिक है? Why not 2:1? Why not 4:1? सर मैं तो कह रहा हूँ 5:1 करो सर। नहीं लॉजिक है, कोई पर्टिकुलर लॉजिक है 3:1 का? 75.1350। Just a minute, sir. Just a minute. Let me remove other columns. Not required at all. आप लोगों को तो मैंने दे दिया, वो जरूरत ही नहीं है। Last rate only it is required. Nothing is required. Remove. That's all. Date, mean. That's all. Finish. ठीक है सर? तो सेव भी कर देता हूँ, जरूरत नहीं है। So we need rate of USD INR Feb future, right? Yeah. So it is 75.1250 on zero. No problem. Yeah, we will give it. One is BCD and one is CDS. CDS लेना है ना? CDS लेना है। 75.1250 1250। सर कल का रेट बता सकते हैं? मैं एक मिनट कल का रेट में चेक कर लेता हूँ। कल का रेट 75.1775। कल का रेट 75.1775। 75.1775। ओके फाइन। आज का रेट क्लोजिंग 75.1250। 1250, am I right? Yes sir. Yeah, ये हो गया। Again the same rate I will put there also. Yes sir. वैसे यहाँ से कॉपी करें तो उस शीट में चला जाएगा। We don't even waste by putting there actually. वो straight away यहाँ से निकल जाएगा। फार्मूला दे दे तो that you know very well actually. Copy. Now you see, now let us analyze. ठीक है, मैंने उसके बाद नहीं किया था, मैंने क्लोज कर दिया। कहाँ पर क्लोज किया? Let me just check it out actually. Percentage only it is enough for us actually. See, यहाँ पर क्लोज कर दिया, यहाँ क्लोज कर दिया, यहाँ पर फिनिश। ठीक है, एक मिनट।
Cumulative quantity has become 0. That is, after 27 January, I have not done anything. Okay. Just for the sake of interest, let us see what we could have done. Okay. You see, 24th, इसमें 90% आ गया. Sir, you have to mute it. म्यूट करें सर, म्यूट करें. श्री रामकृष्णन जी काइंडली. हेलो. यस सर. हाँ चलिए. अच्छा. हाँ राकेश जी. So now I am 90% आ गया. ठीक है सर. Now again I am selling it 150 call. Let us see ना. What is that? बेच दिया? हाँ. So 522 I go to put 50. -50 ओके. आज मैं क्लोज कर रहा हूं सर, देखा ही नहीं है. ठीक है. That's all. 50 closing today. Let us see how much the profit still goes up. 150. My cumulative quantity has become 0. You now see the profit has become 895. Could you able to see this? 895, 8,95,062. I am taking this there on the put side. So I am putting this 8,95,062. ठीक है. 10 यहाँ पर जो नेट वैल्यू, एक मिनट इसका है ना, अच्छा सर, ये अगर लॉस में जाता है तो नेक्स्ट मंथ डबल करते जाना है ना? या एब्सोल्युटली सर. ठीक है. सी 7,42,000. This one 7,42,774. Okay, fine. Yeah. So this I am auto Sam 16,37,000. My profit only increases. So now यहाँ पर कितना है? The same thing actually. See 1,79,000 lakh, and already now I put it like this. ये सब डिलीट कर देता हूँ. So plus 16 lakhs. ठीक है. Not 16 lakhs, sorry. Plus 9 lakhs. ठीक है. इसको ऊपर ही होना चाहिए, सॉरी. Plus this divided by this. Okay. 84%. 84%. That's all. उन्होंने कर भी दिया. 84% per annum. इतना प्रॉफिट तो कभी नहीं बनाया आज तक. Sir, that is why I am requesting everybody come to currency, sir. Come to currency. Sir, वो actually this will be fantastic. इतना दम होना चाहिए ना उमाशंकर जी, इतना दम होना चाहिए 150 कॉल शॉर्ट करने का. And hardly 15 transactions in the year. Hardly 15 ट्रांजेक्शन सर. बाकी तो इधर उधर टूर. सर आप मुंबई में प्रोग्राम बना लो सर, हम सब बैठ के गप्पे मारेंगे. चाय पे चर्चा, हम चाय पे चर्चा करेंगे सर, और प्रॉफिट बनाएंगे सर. दिस इज ओनली माय सिंपल. जी सर. इतने पैसे में तो ठंडी चाय आ जाएगी. सर आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट जोकिंग. Our entire group, every time why I am writing, let us unitedly march to the richness, because there is a meaning in that. I want the entire group to become very, very rich. क्या बात है. Sir, not only that, you see, I don't want you people to thank me. If at all you people have to thank this great guy, Mr. Kothari. Kothari sir. All of you should give a very big clap to him actually. For bringing everyone together. Yes, sir. Yes, sir. Just this model. Yes, sir. Thank you. I am nothing. Yes, Kothari ji. Relentless efforts have brought people, and they have changed the lives of people actually. सर ये हमारा सौभाग्य जो आप सब मिले हैं. Right, sir. हाँ, ये हमारा सौभाग्य है. You became the conduit to
meet so many people and change the life of so many people. And march has just started. We are marching on. सर कोई Yeah. कहीं भी चला जाए वो पूरी जिंदगी आपको याद करेगा सर, Yes, yes. है ना? There will be We no have so many Absolutely, blessings, actually. absolutely. हाँ सर हाँ, अब we are एक getting so मौका many दीजिए सर, blessings. कोतारी जी एक मौका दीजिए हमको, so that we can give the accolades in person, you know, when a chance in the meeting, you know. We'll have So we'll have a Umaji, get together. We'll have a get together in Mumbai. Don't worry. yes sir. Yeah. We so shortly have a Umaji, one Yes, sir. question that you have shown the data for almost 25 months or whatever. Yeah. In that only there were 2 or 3 instances of reverse trading technique. It is That very RTT. unfortunate, sir. It is very unfortunate. I always pray. I am the only person in the whole world pray for a huge notional loss. Nobody will dare to pray for the notional loss. I am an odd man out. Uma, you are not including me. You are excluding. I also pray for a lot of Yes, loss. Who? सर इनिशियल स्टेज में कितने लॉट से स्टार्ट करना चाहिए? No, actually, you see, it depends upon you. What is the fund you are going to infuse in that market? Actually, you can start with 10 and 30 lots or 5 and 15 lots. Yes. Whatever it may, whatever it suits you. Then एक ही उसको model को पकड़ के चलते जाइए. This model, I wish you people should do for 1 year, according to the leverage, the funds what you have. After 1 year, please bear with me. I will come with then arithmetic versions, which will take you to the sky. Okay. It will be multi-x. सर हमारे लिए तो यही स्काई है सर जो आप दिखा रहे हैं। सर ये तो कुछ भी नहीं है सर, मेरा और भी मॉडल में अभी मैंने सेज का लेने का मैंने फॉर्मेट बना दिया. I am not yet started. I am really unfortunate. अभी the market is not conducive enough to start. Moment it starts, you will come to know your money will become 3x, 4x. But I don't claim all these things. I will always say decent returns. I am working on some other model. It will give 20x. अच्छा उमाशंकर जी इसमें कोई स्टॉप लॉस भी रखना है? Exactly. Stop loss is, sir, what I say in my stop loss. No, in my parlance, sir, if I would like to ask some questions with the members. Yes. Shall I? Yes. Yeah. One simple thing I am asking. What is the meaning of stop loss? In a simple language, बता दीजिए मुझे. Stop loss when it is unbearable and then you exit. Correct. I am exiting. Yeah, Because correct. it is unvariable now. Yeah. Yeah. So that means you are buying an infy and 100 rupees, 50 rupees, wherever you could able to bear, you are putting a stop loss and you exit. Am I right? Yes. Right. Any other meaning, any other thinking this group can tell? Any other interpretation? बोलिए. I am leaving it to the audience. लॉस को स्टॉप करना है. नहीं, protection of capital protection, sir. Capital protection, it is already imbibed. What Mr. Patari has stated actually, when you put the stop loss, that is you are restricting your loss, that is capital is protected to that effect. That's all. It is already he has given in a very simple sentence. Any other interpretations can give. 100 people are sitting here. हाँ पिताम्बरम जी बोलिए आप. आप बोल नहीं रहे हैं. The concept of RTTM is derived from there only. Because if you put a stop loss, then where is the MTM loss? Then how do you do that RTTM trade? Right. So that is the reason probably, Mumaji says there will be no stop loss here. Sir, that's all fine. That's all fine. Either for any other thing, the stop loss can be used. That's what I'm asking. Okay, loss restrict करने के लिए stop loss use करना. The whole world is using. Fine. For any other thing, any stop loss can be used. That I would like to listen. बोलिए sir. No, in equity, it can be unlimited. Your stock, which is trading at 1,000 rupees can come down to 2 rupees also. No, sir. So it has relevance. Sir, Ramakrishnan ji, वो तो बोल दिया उन्होंने. कोठारी जी ने बोल दिया. What I am asking is simple question. If for stop loss, we are using, it's a worldwide phenomena. The stop loss is being used to restrict the stop loss. Okay, fine. Can you able to think over the stop loss by making use of it on any other way?
Simple question. Stop loss order. Stop loss order. Stop loss. Order. To put, to short stop loss order. Right. Through stop loss order. Can you please come again, please? And you can explain it in an example? Because I would like to say something that will be much helpful in equity also. If I want to sell on higher price, then I will put stop loss order on higher side. You will sell, sir, you will sell, that is a trailing. You mean to say trailing, correct? Yes, yes. Trailing stop loss, you see, when you are in a profitable mode, you are trailing that stop loss so that you are trying to bring the loss into profit mode so that you continuously trail when the market is high on the upside, or continuously pull down the stop loss when the market is on the downside. If you are on just sell mode, am I right? Correct. Correct, sir. If I am wrong, please correct me. No, you are right. Now I am asking, can you interpret the stop loss for any other means? No. No. Okay. No. Now I tell you. Stop loss, the whole world, our mind has been tuned in such a fashion by the whole world, the phenomena. Stop loss, either you have to do the trailing for blocking the profit, upside or downside, or stop loss for restricting the loss. Okay. I am having a equity, I am having a model where through stop loss only I play, taking position on stop loss only I book the profit. I am always, everywhere I go reverse only. My entire life cycle on the reverse side. Only thing is, I am using it for on a different fashion actually. Stop loss people are using it for trailing, whereas I use the stop loss for taking the position itself through stop loss, upside or downside. Because why? Because in equities, I seek the market through the stop loss. When I put the stop loss, I am not judgmental to the market where it goes, upside, downside, a particular rate tak jayega, particular date tak jayega. मैं सोचता ही नहीं है, because if I think about the equity market, ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, leave alone, I am fooling others, I am fooling myself first of all. It is quite difficult to conquer the crores and crores of people of thought force को conquer करना next to impossible. Better surrender to the market, love the market, enjoy the market, and try to seek the directions. I am working on that model. I will come back to you people after completion of that. Then after that, you don't need any chart, nothing. How much time it will take, I don't know, sir. But whatever you do, if you have proficiency in charts, you can optimize, because I will never reject any knowledge in my life. Any kahin se bhi mile, chart, kuch bhi. All the things, our mind, brain, human brain is more than supercomputer. वो करें, chart में भी use करें ना सर, और 2 पैसा 10 पैसा, 1 रुपया 2 रुपया भी जूस भी हम निकाल सकते हैं. Why I am attending Dibbaranjan Sahu ji ka, I have to thank you. Ramakrishna Joshi ji ka, thank you, I have to thank you. These are all the knowledge where I have got. Even I am telling you, Mr. Pitambaram, he is also made a you have any question? Pitambaram ne haath uthaya hua. You have any question? Yeah, I have a question. Yes, sir. Yes, sir. Sirji, you are saying that you can take a position above 80%. Yeah, 80-85%. For beginners, 90%. When the script is at 85%, you are at R1. Pardon, which one? When the market is at 85%. You are talking about currency, sir? Yeah, anywhere. If the percentage strength is 85. Sir, no, sir, just a minute. I talk only about currency. Sir, I am telling you about currency only. Whatever that you have calculated, 85%, that is percentage strength, no? Correct, absolutely. Percentage strength of 85 means your script is at R1. I don't see, sir. Let me be. I see you work on a high mathematical calculations. I cannot able to match you. Sir, but from there, it can move by 3 standard deviation. Sir, you see, that's what I'm telling now. I have shown you right from January 21st, January 22 till date. If at all, if it moves, just a minute, please. It will get covered in my 1.71% to 2.16%. Nothing more than that. Let it go by 3 standard deviation, 6 standard deviation. It will come into that order, because
average true range actually, the 67 days, it will cover that also. It will get moderated. Sir, it By will the never time it will never get covered, sir. you just take out some data. Okay. See, I can show you any data that you want, because Sir, I have just been working on percentage strength for the past 6 years. Sir, I am not telling you. See, I am not here for competition, Mr. Not competition, sir. But you Sir, are let saying me- that let you can me- take a let me- position at 80 Sir, or let- 50. That is a problematic thing. Sir, just a minute. Just a minute. Please listen. Your talk. Let me also talk. You see, I actually first let me accept I am not a arithmetic expert like you. Okay, please let me first complete it. I have shown you from January 20 to till date. Number 2. Number 3, you show me like this in a practical way. It increases and it can go beyond any strike price, beyond the limit. Excel sheet is with you. You bring the data, 10 years data, and again we will convene a seminar. You showing that. Sir, I have given that Excel wherein one particular year it has moved by 11 rupees. 2018 you are talking about? 2018, 2013, 2008. Sir, 2011 told you work it out, it went by 18 rupees. Yeah, that's what I'm saying. 11 rupees, 18 rupees, and 13 rupees. Sir, that's what I'm telling. I don't have to work. I already worked it out. You please work it out, because the 18 rupees, whatever it may be, the percentage gets moderated between 10% to 90% for much longer period. Oh, I will come with the data, sir. I will come up with the data. Don't worry. Please, sir, please. It is welcome. Actually, it will be very much helpful to the group. No, because if you say that you should start at 80%, your concept is good, but that has to be not started at 80%, sir. आप क्या बोलना चाहते हैं पीताम्बरम जी? आप क्या suggestion है इसमें? एक मिनट. I have started with 98%. Not at. You started with 98, but you are saying that you can start at 80% also, sir. There are many traders are there who don't know anything about currency. Sir, they will start at 80%. No, please don't put the words on my mouth. I have told as a beginning you have to start above 90% only. But I have started here at 98%. Yeah, please don't put words on my mouth. I am very particular in that. I am very clear when I am explaining. You got my message. So I started here with 98% only. You can also show me. That's all. Okay, it is not a question of, you see, if you are really keen on giving the good things to the group, come out with the data like this. Sir, I have given the complete data. Sir, एक minute, रुकिए जरा. You put it in the group. Let the audience decide. If they want, actually, if yours is better one, actually, even I will follow it. As simple as that. You give it like this Excel sheet, you put it now, back test and you put it and show the result. That's all. ठीक है. I think the group will agree. नहीं, उमाशंकर जी fair enough. Data यहीं पर है. You already given the data. Let Pitambaram ji work on this thing on the above 95 and the 0%, and then we'll review the thing. No, it's okay. Okay. So I also welcome it. Sir, I also welcome it. That's what I'm telling in the beginning, right from the beginning. The same Excel sheet, now the people can understand very easily. Let him put the data for 10 years, work it out and show it to me now. ठीक है, पिताम्बरम जी, you can work on this Excel sheet. You have the data now, and just see whether we can optimize our result, and then and then we'll discuss further. ठीक है ना? Ultimately, you have a valid point. You have a valid point. So we'll discuss further on this. I never say he is not having valid point, because he is also one among the Mansik Guru. Okay. Yeah. If he comes out with the result of 10 years, now I have shown all the concept. He is quite intelligent enough to understand this. Actually, let him put it. Let him guide me also. Uma, you have done like this. It may go like this. What is your solutions? Then I will think about it and I will come with the solutions. अच्छा, any question on this model? Any question from anybody on this model? सर, ये स्टार्ट किस सिस्टम पे करना है? स्टार्ट यही क्वेश्चन है सर. अभी तो कंफ्यूजन यही हो गया. किस सिस्टम पे स्टार्ट करना है? तो बोला ना कि 90 के ऊपर बोला ना आपने. अच्छा, 90 के ऊपर स्टार्ट करना है. एंड लोअर साइड 10 के नीचे. लोअर साइड 10 के नीचे सर. सर एक बार समराइज कर दो. उमा सर एक बार I am just showing it to you.
You see, when I started with a 98%. Just see, 98%. First available flight. That's all. You can start here also 97%. We are wherever you want, sir. क्लोजिंग प्राइस या तो पर पहला स्टार्टिंग 95 है, उसके बाद 85 पे भी लिया है ना पोजीशन सर, ये नीचे 85 में मैंने दिखाया ना सर। ठीक है, मैंने रिवर्स ट्रेडिंग टेक्निक में गया, I could get the opportunity to go only one step of the reverse trading technique. दूसरी स्टेप तीसरी स्टेप का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, because 2018 is 1 year before the election year. 2019 में election है। आप election year का पहला साल देखिए, हमेशा डॉलर मूव करेगा, because all political party they will accumulate the dollar, then they will sell out when the currency depreciates much, so that it will go to the election fund. ये होता है हर इलेक्शन का पहला साल भयंकर मूवमेंट होगा सर, वही तो हमारे लिए फायदा है। When the wrong, महीना स्टार्ट होगा, उमाशंकर जब महीना स्टार्ट होगा तो हमको कितने दिन तक वेट करना है सर? जिस टाइम आपको 99% टॉप परसेंटेज और बॉटम परसेंटेज मिलेगा, स्टार्ट करना है, दैट्स ऑल। अच्छा, जैसे आपका अगर जैसे अभी मार्च का चालू होने वाला है जल्दी से, मार्च का, तो मार्च के बाद में हम देखना चालू करेंगे कि भाई मेरे को 90 के ऊपर कब मिल रहा है। जिस दिन मिल रहा है उस दिन मैं 3 कॉल शॉर्ट कर दूंगा, और 0 और 10 आता है तो मैं 3 पुट शॉर्ट कर दूंगा। ठीक है ना? बिल्कुल सर, आईटीएम वाला, आईटीएम बाय ₹1.50। दैट इज द सब एंड सब्सटेंस ऑफ दिस स्ट्रेटजी। That's all. The sum total of the premium you should have 3. वन पुट भी करना है सर ना, 3 कॉल 1 पुट। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली सर ने जो कहा, मैं एक में रिपीट कर लेता हूँ। सर ने भी 80% का जो फंडा सर ने बताया था, उमाशंकर सर ने ये कहा था कि 90% 10% का गैप ले लीजिए, अपर साइड 90% के ऊपर आप कॉल बेचिए, 10% के नीचे आप पुट बेचिए, सिंपल। अगर आप 80% क्राइटेरिया को ये करते हो, लेते हो 80% को, अगर आपका चार्ट वाइज, अगर जिन लोग चार्ट वाइज देखते हैं वहां पे रेजिस्टेंस वगैरह कहीं आता है, देन यू कैन गो फॉरवर्ड। सो वो चीज सर ने ये चीज ऐड किए थे। अगर जिनको चार्ट ये सारे चीज में कंफर्टेबल नहीं है तो दे कैन चूज 90 और 10%। Correct. Now dear Asas, sir, really fantastic. Hats off to you. Because 90 मैंने यही बोला, 90 and less than 10, because just मैंने ये बोला ये एक्सेल शीट के साथ भी काम कर सकते हैं, जिसको चार्ट में एक्सपर्टाइज नहीं है। अगर चार्ट में एक्सपर्टाइज है, I am going to come with another model. Only 3 people in this group knows. I don't want to take the name. We can blow the market. Currency market will blow the equity market. Even at 50%, 52%, कहीं भी start कर सकते हैं। There is no limit at all in currency, which I am working on it. Okay, good. हेलो जी सर, बोलिए सर। पीताम्बरम जी ने एक बहुत अच्छा, बहुत लंबा डेटा शेयर किया है। वैसे करेंसी का नॉलेज मेरे को ज्यादा नहीं है, बट वो डेटा को मैं एनालाइज कर रहा था, तो डेटा में एक चीज बहुत क्लियर है सर। ब्लैक स्वान जितने भी हुए हैं, चाहे 11 रुपया, 18 रुपया, या ये सारे हुए हैं जहाँ पे रुपी जोर से गिरा या डॉलर एप्रिशिएट किया है, यही हुआ है। कभी भी रिवर्स नहीं हुआ है। अब जितने भी ब्लैक स्वान देखेंगे कभी भी रिवर्स नहीं हुआ। क्या हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए कि वेन एवर वी गेट अपॉर्चुनिटी इक्विटी करेंसी लॉन्ग करने का, यूएसडी INR, तो वहां पे हम लोग ज्यादा क्वांटिटीज में करें, बट जब भी शॉर्टिंग की बात हो, अब उसको चाहे कॉल पुट में कन्वर्ट कर लीजिए या फ्यूचर में कर लीजिए, बोथ आर सेम। जैसे आप इन द मनी कॉल पुट कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो सिमिलर टू फ्यूचर। बहुत छोटा सा टाइम वैल्यू रहता है इसके अंदर। तो whenever we are shorting, I want to put it because you are expert in currency. Whenever we are shorting, we should go small, and whenever we get an opportunity and we are in the long side, we should go big. We should go aggressive. Is it right? Okay, fine, Mr. Vikas, you are asking this question to me. I'll tell you. So because you keep your mute, you don't just keep it open, because in between I'll ask you a question. Okay, fine. Is it right, sir? I'm explaining to you. Just give me some time. Okay. You see, when the equity market is going up,
going up and up and up and up. Okay? So what will happen? The currency strengthens, currency INR niche aayega, fine. Yes. So you are on long side, you don't have any issue because equity market is going up. Okay, so you are worried about black swan event, correct? Yes. And the equity market is going up and up and up and up. You will tend to have this near the 0% in the currency, fine. Where you are shorting 150. Yeah. Whereas in put side you are shorting 150, call side you are shorting only 50, correct? Suddenly overnight, यूक्रेन में बम गिर गया, सुबह यहाँ पर खुलते ही इक्विटी मार्केट 1000 पॉइंट नीचे, निफ्टी 1000 पॉइंट नीचे घुस गया, ठीक है? व्हाट विल हैपन? करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगा ना, करेक्ट? डेप्रिशिएट होगा, no doubt. Sir, एक मिनट, sir, just a minute. First, you tell answer to my questions. Okay? Yeah, correct. I will come back to you one by one. I will answer all your questions. So when current market is around 20,000, you have no issue. Yeah. So currency is near the 0% level. Okay. Yeah, might be. You are shorting 3 parts of put and 1 part of call. Okay, fine. This is fine with you. Yeah. I will come on the selling side afterwards. Now, यूक्रेन में बम डाल दिया, कल सुबह खुलते ही जो है करेंसी डेप्रिशिएट हो गया, ₹1.5 ₹2, ठीक है? So when ₹2 जो डेप्रिशिएट हो गया, what will happen? You are 3 times your short, okay, in the put. The put will go up na, will go down na when the things currency depreciate, okay? Because you see, when the market crash, it is vice versa. Okay, when the market crashes, when the market goes up, call continuously will go up. So you will sell 3 calls, okay, and 1 put. When the market up to 20,000, currency actually, currency will go down. When the market goes up, put will become 0. Okay, put will become 0. So you are shorting 3 puts and 1 call. When the market crashes, so put will raise actually. Correct. Will raise. So when there is a black swan event in the equity market, it is a Diwali for you. Deepavali, you have to celebrate. Now coming to the upside, if it goes, you are selling it. 99% you are selling it. Okay. Fine? Sorry, sir. I am referring about black swan event of currency market. I am not referring equity at all. There is no black swan event for currency marketplace. Don't use this word because black swan event come where there is no moderation takes place through government agencies. RBI is RBI. I call them as Chacha of currency. Every week they moderate. Every week may moderate by writing or by oral. Mr. Sunil Agarwal is there. He is a witness to that. अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो USD INR is going up, मतलब means it is rupees depreciating. जनरली इसमें जो फंडा है, एक मैं बता देता हूँ, 5% every year. इक्विटी मार्केट जनरली लॉन्ग के लिए ही माना जाता है कि कभी भी इक्विटी मार्केट जाना है ऊपर, हमेशा ऊपर जाएगा। ये खुल जाता है, इसलिए इसको ऐसे लूज जगह पे बैठ के नहीं चलाना, इसको या तो ऐसे रखो कि ताकि मोहन सर म्यूट करें। इक्विटी मार्केट हमें पता है, नहीं, मेरा पॉइंट पता नहीं सर, मैं सही से कन्वे कर पाया नहीं। मेरा पॉइंट ये था सर उसमें मैं बता देता हूँ, उसमें ये 2 चीज आता हूँ। इक्विटी मार्केट हमें पता है कि अगर मेरे पास रिलायंस है, अगर वो 1000 से 500 है, तो उसको ऊपर ही जाना है, कंपनी कितनी भी अच्छी हो। बट इन करेंसी मार्केट हमें उसमें उल्टा चलना है। क्या है? लॉन्ग नहीं करना है। करेंसी मार्केट अगर मान लो कि करेंसी अगर USD INR 105 हो गया तो गवर्नमेंट की कुर्सी हिल जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन उसमें रहता है, पूरी 100% रहता है। तो ये जो ब्लैक स्वन जो इवेंट जो आप कहते हो कि हाँ भाई इतनी बड़ी क्राइसिस हो गया, वो इक्विटी मार्केट में होगा, बट करेंसी में उस हिसाब से लॉन्ग तेजी नहीं होगी, उसको किसी भी हाल पे नीचे आना है। तो दोनों उल्टा है, करेंसी में नीचे आना है, इक्विटी में ऊपर जाना है।
तो करेंसी में बैलेंस मेंटेन करना है, सो दैट एक्सपोर्ट इंपोर्ट में उनको मैनेज कर सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो, डाटा देख रहे हो कि हाँ ठीक है, ये 20 ईयर्स का डाटा हम देख रहे हैं, 25 ईयर्स का डाटा देख रहे हैं हमें, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री है। जिस दिन डेवलप्ड हो जाएंगे तो हमारा करेंसी अप्रिशिएट होगा। होगा ही होगा। हमारा government wants it to normally depreciate slowly, so that around 4 to 5% depreciation is permitted every year. Correct. This helps us to improve our export. And more competitive. So, and with the kind of reserves which government is maintaining now, they have much better capacity to control. So it may happen that for few days it may react very high, but then it gets moderated. Yeah. Not only that, to just substantiate that, I would like to bring it to the recent information on newspaper. Nirmala Sitharaman said, we are prepared for the US Fed Reserve policy. Actually, they are hiking of interest rate. We are prepared for it. That means, actually, sir, there are two things. When the currency depreciates too much, that petrol will be sold at 200 rupees, the government will fall. If the currency appreciates too much, even India cannot sell even on Alpine, because it will become very costly, because it is just everything is intermingled with this inflation. Lot of things are there. Currency is the backbone of anything. Even for our family, running a family, currency is required. So if it strengthens too much, our exports will be finished. When our export finish, the labor market will finish. When the labor market finish, government गिर जाएगा. FDI वो चले जाएंगे। अगर बहुत ज्यादा अप्रिशिएट हो गया तो उनको घाटा हो जाएगा सबसे पहले, तो वो चीज। सर अभी आप सर मार्च में आपने पोजीशन बनाया मार्च के लिए? उमाशंकर जी आपके ऑफ हो गए क्या? उमाशंकर जी आपका आवाज नहीं आ रहा। मेरा आवाज आ रहा है? DRS सर आ रहा है आपका आवाज। लेकिन उमाशंकर जी का लगता है नहीं आवाज आ रहा है। पुजारी जी आपका आवाज तो आ रहा है। हाँ, उमाशंकर जी लगता है वो लॉग आउट हो गए, वो दिल्ली में लाइट चला गया है। चलिए, मतलब एनी क्वेश्चन ऑन दिस स्ट्रेटेजी? नहीं सर, पीताम्बरम जी आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट है, पीताम्बरम जी आपसे सिंसियरली मेरा वही रिक्वेस्ट था, आपने जो पॉइंट उठाया था वो जेन्युइन पॉइंट उठाया था कि परसेंटेज स्ट्रेंथ में 80 या 85 पे मैं क्यों करूं मैं, तो आप जो बोले कि वो 90 के ऊपर रहना चाहिए, बट एक बार वो डेटा को बैक टेस्ट करेंगे तो बेटर है। तो भाई उनको एक्सपीरियंस रहा है, आप एक थ्योरी पे बोल रहे हैं, तो यू टेस्ट द डेटा एंड देन कम आउट विद दैट। हाँ चलो आगे, उमाशंकर जी आगे। ओके। Yeah, actually, suddenly my Wi-Fi has got disconnected. I'm very sorry. Just a minute. Okay. What I request Mr. This Pitambaram is actually, if he comes out and we can show it to that group also, then I also will, can be guided by that the facts and figures actually. Then we combine together, because Rakesh is there. A lot of stalwarts are there. We will try to improve on it. I never say. I always say, I only try and try and try. I never always think that mine is 100%. If moment the human being thinks that mine is 100%, that's all finished. You will not have a legroom to grow. Correct. Always सोचना चाहिए. Yes, sir, that is the reason. मैं continuously 14 hours अभी भी काम कर रहा हूँ. That because I never get satisfied. अगर मुझे कहीं और नॉलेज मिले, मैं ओपनली बोल रहा हूँ ना, ये स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया, मेरा तो कुछ भी नहीं था। वेबिनार में अप्रैल 2020 when I given the first webinar, Mr. Patari knows, he only told me to give the webinar. पटारी साहब का माल है, मैं एक्सेप्ट रिवर्स ट्रेडिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं था। क्यों सर? हाँ बराबर, ये सारा पीताम्बरम जी से लेके आए। यू आर राइट। पीताम्बरम जी का स्टैंडर्ड डिविएशन लिया, ठीक है, पीताम्बरम जी का स्टैंडर्ड डिविएशन लिया, बाकी मेरा अपना सारा टूल्स डाला, तो पीताम्बरम जी का that's what I'm openly telling you. I have so many models. Some models goes to credit of Mr. Dibbaranjan Saho. Recently I have learned, I am trying to incorporate all those things.
some models, some techniques I have taken it, of course, from Mr. Pitambar. Why I am calling them as my Mansi Guru? Because standard division, I was not aware of it. It was a Greek and Latin to me. Then I have learned, then I have tuned to my fashion around 60, 70s. That's all, nothing more than. Even Ramakrishna Joshi, yes, on a passing comment, he has said something. I have taken that knowledge from him. Even, of course, the gentleman is not here, Mohit Kakka. Lot of things I have learned from him. So the whole life is of learning only. Right. At the time of death, we learn about the death also. But you cannot be able to, that particular session, you cannot give it to anybody. वो सब होता है सर. चलिए, any other question? सर कोठारी सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मोहित जी को वापस लेके आए. दैट इज ही इज आल्सो गिविंग. मोहित जी के मैं पीछे पड़ा हुआ हूं ये, लेकिन हमारे उमाशंकर जी के वो खास दोस्त हैं, तो वो ही उनको लेके आ सकते हैं. उमाशंकर जी आपसे रिक्वेस्ट है. जी सर. I am trying my level best. थोड़ा सा कूल होने में मुझे लग रहा है, वो इतना गुस्से में थोड़ा सा टाइम लगेगा. ठीक है, वो यंग ब्लड है सर. मेरा तो ऑलरेडी they maintain our group humor level also. मतलब काफी अच्छा रहता है. नहीं, पर क्वेश्चन है तो बताइए, अन्य वो करते हैं ट्राई. अभी मुझे बताइए किसी में क्वेश्चन आंसर्स नहीं है ये स्ट्रेटेजी के ऊपर, एनी डाउट? सर एक क्वेश्चन है उमा जी से, क्या मार्च के लिए कुछ उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई है क्या? हाँ, ट्रेड अपने लिए क्या? मार्च तो आएगा सर, आएगा विदिन अ डे और टू आएगा. उमा सर आप शुरू में थोड़ा हैंड होल्डिंग चाहिए आपसे शुरू में. हाँ सर, not only sharing, I will take the lead as a commandant and I will post my this order, executed orders. Okay, thank you. Okay sir. Actually Umaji's presentation में the unique point is that even if you don't get 100% of what he has said, but that hand-holding is there, so we will not make any mistake. So that is the greatest advantage. But as I understand, this strategy, so protective strategy, and in the whole year of 25 months mein, except for the rolling over, you don't call it rolling over, you call it exit and then enter again. Except for that, the reverse trading opportunities are just maximum 3 times, and with very little trading, we are able to make this kind of return. That is really amazing strategy. And hope in the next 2-3 days the handholding will start and the whole group will get benefited. Thank you, sir. Sir, just a minute, last. Just a minute, Excel sheet. I'll just one more thing I'll show it to the group. You just see, we have missed the opportunity on 14th February. That is 90%. 14th February. 90%. Yeah. So okay. 90% in call input. Let me see, 14th February. So there also we cannot do anything. Okay. So we already paper mein to kar diya, but we cannot able to do. Now what we have to rely upon this only. This problem is I have to rely upon more than 90% to start it. That's all, at least, or it should go down by 0% at 10%. So for that, you people should bear with me. Moment I get the first flight, I will immediately take off. So I am waiting for that. I know that people are currency group open ho gaya. So particularly Mr. Patari, I have to be very thankful to he has opened a separate currency group for me. Fantastic. Although I can monitor everything, I can just give my ideas and suggestions everywhere. But अब मेरा ग्रुप में अभी भी स्टार्ट नहीं किया. I have been thinking over all these things actually from the day one before I again rejoined this group actually. So I have been working on this model only for quite a long time. So I got this opportunity only yesterday, today morning only I completed. Around 11 o'clock I have completed today. Then I checked it up. 10 times I checked it up. So before that I back tested also. So moment I get the first flight, more than 90% or less than 10%, I will start. We all will start. उमाशंकर जी, अगर आपने अगर 150 का शॉर्ट का पोजीशन लिया और आपने ग्रुप में डाला,
100 मेंबर ने लिया तो 15,000 पुट शॉर्ट हो जाएंगे उस दिन। सर वो हम खुद न खुद ये मार्केट को हम मूव कर सकते हैं। We can become movers and shakers. So that is the reason, sir. I am time and again with humbly I am telling actually, let us all unitedly march towards richness. 15,000 put short. अरे बाप रे। So Umaji, this with hardly, you know, डॉलर में तो लाखों, तो 15,000 1 लाख तो कुछ भी नहीं है सर। दिस इज लॉलीपॉप, स्मॉल लिलीपुट है सर। लाखों लाख चलता सर अंदर डॉलर के अंदर। हम तो कुछ भी नहीं होते। इतना है क्वांटिटी इसके अंदर, इतना क्वांटिटी है बहुत है सर। आप देखो ना सर, 20-20 10-10 लाख का सर। हम तो कहीं की चीज नहीं है उसके कंपैरेटिव में। उस फिर भी इतना लाखों रुपया कमा सकते। दैट इज ब्यूटी ऑफ इट इन करेंसी। What I can suggest to start with, people can start with 5 multiples, 5 and 15. एक साल करके देखें, it's worth doing it. क्या ज्यादा से ज्यादा क्या नुकसान? उमाशंकर जी 5 and 15 करने के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना रहेगा? सर 5 and 15 करने के लिए अभी देख लीजिए ना सर, यहाँ पर कितना है सर। 5 and 15 के लिए मैक्सिमम आप 2 स्टेप चले जाइए ना, वो भी मैं कल डाल देता हूँ। बिकॉज 5 समझ लीजिए, 15 ले लो। So 15, ठीक है। 5 and 15, 15 का क्या करेंगे? 40 करेंगे, 30 करेंगे रिवर्स ट्रेडिंग, ठीक है। तो 45 then 90, that's all your total. 90 into 2000, 90 into 3000 ले लो, 3,60,000 रुपया। Not more than 5 lakhs at any length. You will not use it more than 5 lakhs, because by the time you will factor upon, you will continuously play into the profit only. Your profit will get activated actually. So you don't require. That's all. Okay. Simple sir. मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि we are starting at 90 plus and less than 10%. कितना जाएगा सर? मैं तो कह रहा हूँ, अगर आप 5 लाख स्टार्ट करके 10 लाख और बेचो, ठीक है। 5 और 15 को ऊपर बेचो 30 लाख, ठीक है। 30 लाख को और 90 लाख बेचो, 90 लाख को 270 लाख, 270 को 540, वहां तक चले तो बढ़िया है। So notional loss, if you pray for more notional loss, only thing is you should have a steel heart. Me actually I've been in this field because I am having a steel heart. So उमाशंकर जी, उमाशंकर जी, whenever you are squaring off, month end में जब square off, हाँ, एक मिनट सुनिए। फरवरी 74 का कॉल का आज का वॉल्यूम है सिर्फ 3,243। फरवरी का 74 CE का वॉल्यूम है ओनली 3,243। एक मिनट सर, मैं लेट मी ओपन इट। Margin में नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द नंबर वॉल्यूम लॉट इज टॉकिंग। हाँ, वॉल्यूम ऑफ 74 कॉल ऑफ फरवरी is only 3,243. And if I see 76 put also, let me add 76 put also. USD INR 74 कॉल। हाँ, 76 पुट का जो वॉल्यूम है वो आपका है, देखिए 70 इधर गया, 76 का वॉल्यूम हुआ है 20,657 आज का यार ठीक है सर। 20,000 तो where we are talking about lakhs of volume. It is only 20,000 I will tell you, today. So I am coming 20,657 is the put volume, whereas open interest is 39,082. Okay, leave the open interest. Okay, there you are right, 3243. Okay, now I am coming to the Excel sheet. और अभी देखिए वॉल्यूम था, that was only 3,000. No problem. You see, I am coming to that. You see, if our group short 15,000 तो मिलेगा ही नहीं, वॉल्यूम ही नहीं मिलेगा। कौन सा? अगर हमारे ग्रुप ने अगर 15,000 कॉल शॉर्ट कर दिया है, पुट शॉर्ट कर दिया, तो where is the volume? I'll tell you. You see, when we have short यहाँ पर, तो कहाँ पर है? Just a minute. So since we are playing between this 80% के नीचे, we are only the booking the profit where already open interest has been created. ठीक है? When we have already created the positions, when we book the profit, we only
book the profit what the open interest we have already created. No, I agree. I'm not disputing that one. I'm disputing this one. Ki liquidity is not there to short 150 put. That's what I'm trying to say. Where is the liquidity to short 150 put, 150 call? No, sir, no, not like that. I'll tell you. See, when you start with the 150, okay, somewhere you are 99%. You are starting. Everybody will put it. Actually, I'm not disputing 99% or 90%. I am disputing the liquidity. Liquidity is not there in the market to short 150 call or 150 put. That is what I'm trying to say. Where is the liquidity as per the data? Sir, I got your message actually. You mean to say where 3,200 total जो है यहाँ पर position है. So where is the liquidity? Trading हुआ है तो 3,200 में आप 150 कैसे short कर देंगे एक ही आदमी? That is the whole India is trading in that one. हाँ. No, तभी तो कह रहा हूँ आप लोग 10 लाख 5 लाख में स्टार्ट कीजिए, ठीक है? I am going to put 150, 100 lots like that. Just see ना. Just see. Anyhow. Because I am putting 50 lots, 60 lots like that. I am, you see, not taking into consideration. Of course, your mathematical calculation is perfect. I fully agree with you because you are collectively, you are this calculating actually the whole group. Fine. I don't know about it. If I am not joined, I don't know about it now. Still my volume goes inside. Are you really able to? आपने को trade किया 150 ये put का short किया आपने और आपको rate मिला same rate? Are you able to do it? Yeah, that's what I'm telling you. ये तो कुछ भी नहीं है. Myself and Muralidhar, we have put 450 lots in euro. Compared to dollar, euro is nothing. Still, it went inside. Sir, Mr. Kothari, I would like to give one data point. Actually, the forex market is the largest in the world globally in comparison with stock market or any other market. I'm not disputing that. So no, I'm not. See, you are only looking at the derivative, lot size that is being sold or OI position created. The everyday volume of forex in India is 33 billion. The traded volume, and globally it is over 6 trillion. Forex, just forex, every day 6 trillion is the volume of forex. And in India alone, if you are talking about only the USD INR or these 4 pairs, it is 33 billion. The liquidity is the highest. I'm not disputing all this thing. I'm not disputing all this thing. I'm not disputing at all. What I'm trying to say, the future volume is 100 times of the call and put volumes. Future is extremely liquid, but put and calls are not liquid in the Indian NSE market. That's what I'm trying to say. Sir, NSE में ये मॉडल का डाउट है. फ्यूचर में कोई इशू नहीं है. फ्यूचर यू हैव वेरी गुड लिक्विडिटी, बट ऑप्शंस में लिक्विडिटी नहीं है. One more suggestion I am giving you. One more suggestion. Let me take your statement absolutely on my side. Okay, I agree with you totally. No second thought. You can use this sheet. You can use this sheet. Those who have a little bit fear in mind. Okay. When the same way, instead of selling the call and put, you take the strike rate actually different month. Only thing is उसमें different months का जो है future बेचना है तो एक जगह बेचना है एक जगह खरीदना है. That I will work it out and I will come back to you. सर अभी मैंने देखा सर इतने लॉट के लिए ना बेसिकली आपका जो आप बोल रहे हैं थीटा डीके की जगह आईटीएम में तो वी आर लूजिंग, मतलब वी आर नॉट एग्जैक्टली सेल भी नहीं कर पा रहे उस प्राइस पे जो भी मैंने फरवरी का देखा. सो डिफरेंस इज कमिंग 1.2 और आपका सेलिंग हो रहा है सपोज 1.250 आ रहा है और हम सेल कर रहे हैं 1200, मतलब वो 50 लास्ट का 0.05 लूज कर रहे हैं. कौन सा यू मीन टू से फरवरी का आप देखिए सर, फरवरी 22. हाँ फरवरी का जो ये आपका 74 का कॉल है दैट इज 1.1225 और फ्यूचर है 1250 मींस 0.25 का अंतर है 0.025 का. नहीं ओके कॉल का क्या था? मैं एक्चुअली आई टोल्ड यू ना दिस आई वर्कड इट ऑन मैथमेटिकली. समवन गिव्स मी द फॉर द एंटायर. हां बट ये सर एक्चुअल में होना चाहिए था, ये 1250 होना चाहिए था अगर आप एग्जैक्ट लेंगे विदाउट थीटा डीके, बट इट इज कमिंग 1.1225. This is on 14th February. हाँ और इवन आस्क और बिड तो और कम है अभी, मतलब वो तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है. या हु इज स्पीकिंग? सर प्रशांत. प्रशांत जी एक काम कर सकते हैं, आपका जो जनवरी 2010 टू टिल डेट
Can you give for all the strike prices that particular day? Can you jot it down those things and you send it to me? ठीक है सर, मैं निकाल के एनएससी में, अरे वो एनएससी में डेटा नहीं मिल रहा है ना अभी, एनएससी 1 महीने का डेटा नहीं दे रहा है अभी, हिस्टोरिकल डेटा नहीं दे रहा है। सीपी का नहीं मिलेगा सर, फ्यूचर का मिलेगा, सीपी का नहीं, तो उसका भी मिलेगा। नहीं मिल रहा है, उसका भी 1 महीने का डेटा नहीं दे रहा है एनएससी। आपको एवरीडे नोट करके रखना पड़ रहा है। तो आपको एवरीडे नोट करना तो पड़ेगा। अभी अपने को पुराना डेटा क्रॉस वेरीफाई करना चाहे तो वी कैन नॉट डू इट। सर जो मैं बोल रहा हूँ, कॉल और पुट में ना हमारे स्लिपेज हो रहे हैं, हमें थीटा डीके की जगह हमें स्लिपेज हो रहा है, मतलब वी आर एक्चुअल, वो जो हमें एक्चुअल डिफरेंस भी मिलना चाहिए ना, वो भी नहीं मिल रहा है। हाँ, तो अभी जैसे अभी ये 150 लॉट अगर आप शॉर्ट करेंगे तो मार्केट रेट पे करेंगे या आप लिमिट रेट पे करेंगे? जो whatever अवेलेबल रेट द सेम टाइम कॉल एंड पुट। नहीं, मार्केट रेट और आपका बेस्ट बिड और आस्क में बहुत फर्क है। बहुत फर्क है सर, 1.100 है। अगर आप 150 ऑर्डर का मार्केट रेट लगा दोगे तो सीधा रेट आपका 50 से वहीं बढ़ जाएगा। बिड एंड ऑफर रेट यू आर टेलिंग। हाँ, बिड एंड ऑफर मार्केट रेट आपने 150 लॉट का लगा दिया। ओके, बिड सपोज 74 कॉल का बिड, व्हाट इज द बिड रेट ऑन 14th फरवरी? यू हैव इट सर 1.10 है और 1.10 आस्क है और 1.22 है, तो मींस अराउंड 12 पैसे का डिफरेंस है अभी। आज का 1.10 आपका बिड का रेट है और आपका ऑफर रेट है 1.22, और सर वो भी 20 क्वांटिटी में। और सर डिफरेंस नहीं, 20 क्वांटिटी। अगर मैं 150 लगाऊंगा तो बहुत नीचे चला जाएगा ना मेरा। 150 अगर आपने मार्केट लगा दिया ना तो ये रेट आपका चला जाएगा करीब 15 पैसे ज्यादा। 1.03 है फिर वो। और सर एक चीज और है, इसमें एक्चुअल डिफरेंस है 1.250 और हमें एक्चुअल रेट जो मिला 1.2200, मतलब ऑलरेडी 0.005 का वहां भी लॉस कम है। पुट में यू मीन टू से? कॉल में पुट में भी सर यही होगा। पुट में भी एक बार चेक कर लेते हैं सर, एक सेकंड। पुट का बता देता हूं मैं आपको। पुट में डिफरेंस है आपका 5 पैसे का, 0.8875 एंड 0.93। हाँ, 5 पैसा का। हाँ, उसमें 5 या हाँ, अब 5 पैसा का फर्क है। तो 5 पैसा 150 लॉट में तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। बिल्कुल फर्क पड़ेगा सर। व्हाट आई कुड से एक्चुअली वी हैव नाउ दिस गिवन दिस शीट, एक्सेल शीट फॉर 2-3 मंथ्स पेपर ट्रेडिंग में करके आप लोग देख लीजिए, मार्केट रेट में ही है दोनों में। मार्केट रेट स्ट्रेट अवे मार्केट रेट में तो एग्जीक्यूट होगा ना, दोनों होगा, एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ओनली द प्रॉब्लम इज क्वांटिटी। नहीं, वो सेम रेट पे नहीं होगा, वो रेट एकदम से ऊपर भाग जाएगा। आपने रेट डाला है, मार्केट रेट डाला ना, 20 पैसे का डिफरेंस आ जा रहा था, 20 पैसे का, 20 पैसा ऊपर तक जाके वो आपका रेट ले लेगा 150 लॉट के अंदर। हाँ, एक दो लॉट पे कर रहे हो तो फर्क नहीं है, बट इफ यू 150 लॉट द रेट विल गो टू 20 पैसा 25 पैसा इन आइदर साइड। That is very risky. Because actually you mean to say LTV is the different thing, sir. Bid और ask price different thing. हम जो buying और selling करते हैं, it's based on the bid और ask price, and LTV is the different thing. ठीक है, जो LTV दिखा रहा है उस रेट में हो सकता है कि हमें ना मिले, बट जो bid और ask price होता है तो उस रेट में मिले। अगर हम मैंने वही बताया ना दिव्या जी, मैंने वही बोला है, bid और ask का रेट ही बोला है। Actually, Mr. Kottari has said correctly. Actually, he has said correctly, because if you put 450 points, 4 bid में खत्म हो जाएगा, एक बंदे को मिलेगा, बाकी बंदे को नहीं बेच सकते। So we cannot go for the higher volume. That problem is there. We have to look into that. We'll start with 5 and 15. 5 and 15 we can 5 and 15 or 5. If we start in Finwish, you can start with 1 and 2 also, 1 and 3 also. 1 and 3 also. Yeah, you are right. You are 1 and 3 also we can start, and we can have a algo also there. कि जब भी आपका वो ये इतना 99% आ जाए तो मेरा एग्जीक्यूट हो जाए। राकेश जी algo for you. Yes, sir. Yes, sir. In fact, I was thinking the other way around, that this looks like to be a very good arbitrage opportunity. If the difference in between such is such 0.20 का अगर difference है bid और ask में, and it is way off than the future price, then that creates an arbitrage opportunity as well.
अच्छा अच्छा अच्छा। आई थिंक सर मेरे ख्याल में मार्केट के अंदर अभी ये करेंसी का सेटलमेंट कैसा होता है? एक्चुअल बेसिस पे होता है और सब क्या कैसा? दैट इज द थिंग। कैश सेटल, कैश सेटल, कैश सेटल, कैश सेटल, कैश सेटल। ये जैसा निफ्टी और बैंक निफ्टी का सबसे अच्छा आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी है 20%। सर मेरे ख्याल में हमको बिड और आस्क जो है वो हम एक्चुअल में मार्केट बंद होने के बाद देख रहे हैं, तो आई एम नॉट श्योर हाउ करेक्ट इट इज। मे बी हमको जब मार्केट ऑन है उस टाइम पे देखना चाहिए कि एक्चुअली इतना ही डिफरेंस आ रहा है या नहीं, उस समय मैंने चेक किया राकेश जी, 5 पैसे से ज्यादा नहीं आता उस समय। आई थिंक ये ओके उस समय 5 पैसे आता है। आप फ्यूचर की बात कर रहे हो? नहीं प्रशांत, आप फ्यूचर की बात कर रहे हो। आईटीएम में 5 पैसे आता है। देखिए आईटीएम में बिड और क्या आस्क होता है, कैसे? हाँ आईटीएम में ज्यादा फर्क नहीं होगा। जब आपका डीप इन द मनी हो जाता है तो वहां पे डिफरेंस होता है, चाहे वो आप इक्विटी हो चाहे वो करेंसी हो। तो एक बार आप रियल ट्रेडिंग में कल हम लोग देख लेंगे। चलो कल चेक कर लेंगे। हाँ वो एक्चुअली हेलो morning time maybe I don't know about it. I have to check it out because in the evening closing prices, I think it mentions that today's open this traded currency is set off between the long and short. On the open item they have shown it separately. I think so. So morning only we have to see in options how much volume goes actually. When we see in the morning, tomorrow morning we will come to know. Hello. जी सर। Are you able to hear me, sir? हाँ बोलिए। सर इसको मैनुअली सेटल करना है कि इसको ऑटो सेटल होने देना है लास्ट मंथ के? मैनुअली सेटल कर देना सर। We should not leave it to auto settle. सर उसमें भी फिर स्लिपेज होगा सर? कुछ स्लिपेज होगा सर, 5 पैसा नीचे आ जाएगा, 0% and all that. Sir, actually see, we cannot able to work it out up to the last mile actually, 1 पैसा तक. 5 पैसा या 10 पैसा नीचे, that will take care of because you are selling thrice the cumulative quantity है ना सर, उसका भी तो थीटा इफेक्ट होगा ना, नीचे आएगा ना. So what I would suggest, you just to start with 1 lot and 3 lot and work it on paper trading. Then of course we are coming with the future trading also. Those models, when it comes actually, that also you work it on a paper trading. After a year or so, you can start. Sir, are you able to hear me? Yes. I have placed 150 quantity orders in like not in the money, out of the money, like out of the money or ATM also. So in the single shot, it will not ऑर्डर इतना जल्दी प्लेस नहीं होते हैं, वो एक दो ऐसे ही प्लेस होते हैं क्योंकि लिक्विडिटी इशू है। एटीएम और ओटीएम में भी इशू है, लेकिन आईटीएम में बहुत इशू होगा। या होगा आई एम नॉट टेलिंग, आई एम नॉट रिफ्यूजिंग, होगा 100% होगा because this it didn't strike my mind actually. Mr. Qatar has said correctly, only 3243 is the volume है, we have to see that actually. आज सुबह मैं 75 का मैंने स्ट्राइक प्राइस सेल किया था पुट ऑप्शन 50 लाख जी। मेरे को लगभग 10 मिनट हो गया मेरा जो प्राइस में एग्जीक्यूट होने के लिए। आपने क्या किया था, फिर से बोलिए क्या किया था आपने? 75 का पुट ऑप्शन मैंने 50। अच्छा 50 लोग शॉर्ट किया था आपने? हाँ शॉर्ट किया था। तो आपको रेट मिला वो सेम रेट? जो रेट मैंने डाला वो रेट में ही मिला, लेकिन मेरे को 10 मिनट वेट करना पड़ा। अच्छा ओटीएम पुट, ओटीएम नहीं, एट द मनी, एग्जैक्टली एट द मनी। अच्छा सर 75.6 now to today's rate. अच्छा 7 at the money, okay fine, today 7.12, okay ATM, okay fine. तो आपको 10 मिनट लग गया। हाँ जब मैं 150 लॉट डालता हूँ तो मेरे को भी बहुत टाइम में 150-200 लॉट सेल करता हूँ, लेकिन दूसरा स्ट्रेटजी है तो उसमें टाइम लगता है। आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? हारून। अच्छा आप जो करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं इतना? हाँ सर बहुत पुराने मेंबर सर, ये बहुत ज्यादा करेंसी में ट्रेड करते हैं। अरे तो फिर तो आप भी एक वेबिनार लीजिए ना, फिर आप भी अपना स्ट्रेटजीज बताइए। मैंने क्या बोला था, छुपे रुस्तम बैठे हैं सर, बहुत सारे लोग बैठे हैं सर, बड़े छुपे रुस्तम में अपने ग्रुप के अंदर। अरुण जी जो है, मैं बता देता हूँ सर, अरुण जी जो है वो ऑप्शन के मास्टर है, कॉल पुट का माहिर है और ट्रायंगल और स्ट्रैडल का माहिर है, खिलाड़ी है ये। अच्छा अरे लेकिन लोग सामने नहीं आते बिल्कुल भी, ये प्रॉब्लम है। अरुण जी आप सामने आइए भाई। हाँ नहीं सर।
नहीं सर, ये मैं अभी मोबाइल से कनेक्ट हुआ क्योंकि नेटवर्क इशू था। नहीं कोई बात नहीं, मैंने ग्रुप के अंदर भी आप जो है ना, अगर आप इतने एक्सपर्ट हैं इसमें करेंसी में और कॉल पुट के अंदर, तो यू मस्ट कम इन द फोरफ्रंट, दैट इज व्हाट आई एम रिक्वेस्टिंग। हाँ सर, मैं आपको वर्बली मतलब जैसे फोन में जैसे मैं आपको आगे समझाना होगा मैं समझा दूंगा, क्योंकि ऐसे ऐसे वेबिनार में मेरा एक्सपीरियंस नहीं है वेबिनार देखे, तो अभी अरे सीख बोलना रहा है, हूँ। कुछ नहीं करना है। वेबिनार में डिफिकल्ट है, अपन घर के लोग हैं सारे भाई। हाँ इट इज सर, नॉट समथिंग लाइक अपना मैं आज कॉर्पोरेट नहीं है। मैं नॉर्मली मेरा मंथली वॉल्यूम होता है 500-600 लॉट का होता है यूएस अरे में। बाप रे, अच्छा, वेरी गुड। तो मेरे 600 अकाउंट है। उमाशंकर जी, नाउ यू आर टू कंपटीटर, वन इज पीताम्बरम जी एंड सेकंड इज नाउ अरुण। So I welcome it, sir. you- It is always competition to be very healthy. Now, actually, I could able to make it out. Someone is better than me. 600 lots. Really, hats off to him. Hats off to this guy, actually. And Really then good. another is your Muralidhar Rao जी, तो चार, you are 4 competitors now. मुरलीधर राव तो सर मेरा बहुत पुराना है सर, वो बहुत ही पुराना जानकार है। So core group 4 आदमी का है, बाकी सब लोग मेंबर है। You have a committee, we have a committee of core group in currency. ना मेरा एक चीज बोलना है, उमाशंकर जी का एक्सपीरियंस क्या है? 150 लॉट जब वो ट्रेडिंग करता है तो उसको लिक्विडिटी का इशू आता है कि नहीं उमाशंकर जी का? सर नॉर्मली सर ऑप्शन में अभी मैंने ये बनाया, ठीक है, ऑप्शन में करने के लिए। नाउ आई कुड एबल टू गेट द इन्फो एक्चुअली, देन आपके थ्रू भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, यू हैव टेकन 10 मिनट्स फॉर यू टू एक्चुअली द थिंग्स गेट्स एग्जीक्यूटेड। ओके फाइन। सो नाउ मेरा उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इन फ्यूचर आई लिटरली आई हैव नो प्रॉब्लम, everything gets inside. So I go up to 500 600 lot, it gets inside. So I have no issue at all in this future. Okay. Now in currency, now the problem is again I will work it out and find out what is the way around. But when there is no totally बिल्कुल ही नहीं है तो थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। उमाशंकर जी, करेक्ट सर, बोलिए सर। अगर आपको 500 एक साथ नहीं मिलता है तो आप ग्रेजुअली ऊपर ऊपर बेचने के लिए डालिए ना, आप अभी नहीं तो बाद में मिलते ही रहेगा, प्राइस भी ऊपर जाएगा। एक्चुअली जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो आज ही नहीं गया तो ऊपर डाल के बेच सकते हैं, बिल्कुल जा सकता है। अब 150 शेयर को 10 में डिस्प्यूट कर दो, 15 शेयर बिकेगा ऑटोमेटिकली, एक पैसा ऊपर डाल दो। हाँ करेक्ट सर, बट लेकिन जो राकेश जी कह रहे हैं, जब ₹1.30 में ही नहीं बेच रहे हैं सर, कई बार है ना सर, 1/4 ऑफ द पैसा में भी हिट नहीं होता सर। नहीं आज नहीं तो कल आपका 98-99% है तो एग्जीक्यूट तो होगा ना, आज नहीं तो कल सर, उतना मूवमेंट आएगा ही ना मार्केट में। Absolutely, I agree with you, sir. Because if I start with 90%, sir, यही तो तजुर्बा है सर। Just fantastic actually, because the chart is also showing upside when it is going with the help of the chart. If I start with 90% instead of that, अब तो और ज्यादा प्रॉफिट होगा सर। करेक्ट, तो 150 रोजाना थोड़ा बेच दूंगा। He is right, इसमें भी सोल्यूशन आ गया, बैठे आ गया, उन्होंने दे दिया सोल्यूशन। बट प्रॉब्लम एक आएगा, 150 आदमी अगर 150 शेयर बेचने की कोशिश करेगा तो प्रॉब्लम आएगा। वो तो प्रॉब्लम है होल ग्रुप क्योंकि आप बताओगे 99 आया, सब बेचने का हमारे यहाँ पे आके इंक्वायरी कर देगा, एनफोर्समेंट डायरेक्टर आ जाएगा, ये काम कौन सा ये ग्रुप है भाई ये। सर अभी तो मैंने कुर्सी में एकदम ठीक से बैठा था, पीताम्बर जी ने इमीडिएटली हवा निकाल दी। 150 आदमी बेचेंगे तो प्रॉब्लम तो आएगा। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली खड़ा हो जाएगा सामने से, ये क्या चक्कर है भाई, ये क्या हो रहा है ये। नहीं, आपको ऐसे करना चाहिए, 5 शेयर हर आदमी बेचे तो 750 शेयर ही हुआ, फिर दूसरे ऊपर के स्लैब में डालते जाइए सब आदमी। राइट, हाँ करेक्ट, वो कर सकते हैं, 1 पैसा 2 पैसे में डालते जाइए सब। वो धीरे डिस्क्लोज क्वांटिटी 1 दिखाने का, 1 टन दिखाने, करेक्ट, डिस्क्लोज क्वांटिटी कम दिखाने का। बिल्कुल तो ही चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। बिल्कुल, या तो नहीं चलेगा। एब्सोल्युटली राइट, आई फुली एग्री विद यू सर, दैट हैज टू बी डन एक्चुअली। बट उसमें क्या है, वी कैन टेस्ट दिस मॉडल विद 1 लॉट, बट that we have to do it only in Finvesia because there is no brokerage. या तो जरोडा में नहीं कर सकते, 1 लॉट में 20 पैसा तो वही ले लेगा सर जी। जरोदा में मैंने एक बार ट्राई किया था, 200 रुपया लॉस आया था, 600 रुपया खर्चा आया था।
नंबर ऑफ ट्रेड्स के लिए 20-20 रुपया हर ट्रेड में, 20 और 20 40 रुपया। बिल्कुल 40 रुपया लगता है, 40 रुपया तो चलेगा ही नहीं, आपको जो भी करना चलेगा नहीं, है। बिल्कुल नहीं चलेगा। और इवन ज़रोडा ज़रोडा में में अगर नहीं आप चलेगा। स्प्लिट भी करोगे तो चलेगा नहीं, क्योंकि आपको हर ट्रेड पे वो 20 रुपया लेगा। हर ट्रेड में लेगा, हर ट्रेड में लेगा। वही तो कहना सर, ज़रोडा में और मेरे हिसाब से ज़रोडा में तो टोटल दूर फेल का ऑप्शन देगा भी नहीं, वो ओपन ही नहीं करेगा वो। नहीं, ऊपर इसमें नहीं तो अपन करेगा। दूर का नहीं कर ज़रोडा रहे में हैं ना। लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शन। हाँ, फिनवेशिया में कर सकते हैं। तो if at all some people wants to start this, actually I also decided already to shift my currency account to Finvesia, because कोठारी जी आपने तो कर लिया, there is literally, and उसको tax P&L tax audit का रिपोर्ट भी दे रहे हैं सर कोठारी जी। इतना अच्छा नहीं है, इतना अच्छा नहीं है जितना ज़रोडा का अच्छा है। ज़रोडा P&L रिपोर्ट इज मच बेटर, टैक्स रिपोर्ट ऑफ ज़रोडा इज मच बेटर। हाँ टैक्स, वो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट चाहिए वो फिनवेशिया, या तो मैनुअली बना लूंगा मैं अभी का, डेली अपडेशन आई एम डूइंग इट एंड आई डोंट हैव एनी इश्यू एट ऑल, वो मैं कर लूंगा। बिकॉज़ टोटल ईयरली में 15 या 20 ट्रांजैक्शन है, उसमें कोई खास नहीं, इमीडिएटली वो कर सकते, कोई मैनुअली भी कर सकते हैं, दैट्स नॉट ए बिग इशू। मीनवाइल किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? और नहीं तो और भी लैंड देन, इफ एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन ऑन द दिस स्ट्रेटजी, इफ देयर इज नो क्वेश्चन। ये फाइल आया नहीं है अभी तक। क्या नहीं आया सर? एक सजेशन था, एक जो फ्लो चार्ट रहता है ना, कि ये तो मालूम पड़ गया कि 90 ऊपर परसेंटाइल अगर रहेगा स्ट्रेन तो जो करने का है 1:3 रेशो, लेकिन जो डे टू डे देखने का और जो एग्जिट लेवल्स है ना, वो बात का थोड़ा कंफ्यूजन रहता है सर। मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन कि एंट्री तो हो जाता है इन एनी स्ट्रेटेजी, लेकिन एग्जिट इतना सब्जेक्टिव रहता है, उससे बहुत वेरिएशंस आता है। तो एक फ्लो चार्ट के साइड में आप जैसा भेजते हैं, जैसा ग्रुप में, ऐसा फ्लो चार्ट के फॉर्म में रहेगा तो वो स्ट्रक्चरल रहेगा सर। Yeah, but I am also novice in currency trading. I am not an expert. That's the नहीं सर, problem. आपने जितना अंडरस्टैंड किया है, आपको तो अंडरस्टैंडिंग रहेगा ना, तो आप उमाशंकर सर से बोल के वो फ्लो चार्ट अगर रख देंगे ना, तो एटलीस्ट एक 1:3 का रेशो का 1 लॉट से तो एक्चुअली हिम्मत कर सकते हैं, अगर एग्जिट मालूम रहेगा। जिस ट्रेड में एग्जिट मालूम नहीं उसमें घुसते नहीं हम, ऐसा रूल है। Yaman ji, I would like to suggest one thing actually. Leave alone all these options trading. Okay, for time being, we all can work in paper trading. Okay, let us do the paper trading. Now let me know why I am telling you. See, आपका स्क्रीन बंद कर दीजिए ना उमाशंकर जी, so that we can see the faces. आप स्क्रीन बंद कर दीजिए ना। पेपर ट्रेड में कुछ होता नहीं है, एक्चुअल ट्रेड ही सब सिखाता है। हाँ, वो इमोशंस तो उसमें आते हैं ना। ना एक्चुअल या दैट आई विल टेल यू। सो अब दिख रहा है ना सर फर्स्ट क्लास? अच्छा, ये करने का ना, नहीं आप स्क्रीन शेयर को बंद कर दीजिए, शेयर स्क्रीन को बंद कर दो। हेलो सर। हाँ ये आप बोलिए। See, what I would suggest, you see, what Mr. Pitambaram has given, this percentage is huge. It's a huge contribution. Sir, I have not seen this thing anywhere. I have not seen this strategy anywhere in the Google, any ebook, anywhere. And he is the originator of the policy. Sir, actually, that is actually Rama. I simply say, I want to put it like this. Actually, I have no inclination or nothing. I get on appreciating the people. Actually, I consider him as a Ramanujam of this group. Beautifully, he has given the standard deviations. That is the reason I have climbed up to this line. I'm very proud to say I don't have any issue. I take few names actually. Muralidhar has introduced me in the currency, and Pitambaram has given me a lot of knowledge. Hats off to him actually. I salute them. What we can do, कुछ भी नहीं करना सर। 99% एक बार आएगा या 1% के नीचे जाएगा, ये तो पक्का। ठीक है, अब आरबीआई का चाचा पीछे खड़ा है। लीव द ऑप्शंस, डू डैम थिंग इन द करेंसी फ्यूचर्स। $100 स्टार्ट करो सर। आई एम गोइंग टू डू इट नाउ। आई एम गोइंग टू शो, आई एम गोइंग टू लीड द वे। अब 0% आ गया। आई एम वेटिंग फॉर द डॉलर either to go to 0% or 99%। स्टार्ट कर लो सर, मैं लिख के दे रहा हूँ। 10 से स्टार्ट करो या 20 से स्टार्ट करो। यू विल नॉट गेट मोर देन 2-3 स्टेप्स। मतलब ही नहीं बनता। वहां से उल्टी पार आएगा, उल्टी पाँव पकड़ के आएगा, या नीचे गया तो
सीधा ऊपर क्लाइम करेगा, इतनी अग्रेसिवली क्लाइम करेगा, then certainly that will be enough actually. If you start with 100 lots, you can open 2-3 accounts, everywhere you can play. वो एक में 10 लाख, एक में 50 लाख, एक में 100 लाख, कोई टेंशन ही नहीं है सर। आप 100% में मिलेगा, बिकॉज यूएस डॉलर में तो इतना लॉट्स अंदर जाता है, यूरो में लॉट ही नहीं जाता। तब भी हमने 450 500 तक में गया, वहां से आई हैव रिकवर्ड ऑल द लॉसेस. Of course, I got a notional loss of around 8.5 lakhs rupees in euro. Then I recovered all the over and above. I made 6 to 7 lakhs. सिंगर सर, हेलो सर। बोलिए। हाँ हेलो सर। बोलिए। हाँ सर मैं एक डाटा देख रहा हूँ, जो 18 की बात हो रही थी, पूरे 10 महीना लगातार मार्केट बढ़ता ही गया, वो भी 63 से। हाउ कैन हैंडल रिवर्स ट्रेडिंग in that condition? Sir, this 2018 data, you please send it across to me. Well, let us see where the 99% starts or 0% starts. वहां से कर लीजिए ना सर। बट सर वो 64 से 75 वन वे गया, कभी एक बार रिवर्स नहीं किया। रेट की बात कर रहा हूँ मैं। रेट तो आप कितना रिवर्स करेंगे उसमें सर? सर एक मिनट सर, रेट तो बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली आई एग्री। 64 से 75 गया 11 पैसा, ठीक, 11 रुपया, ठीक है, 10 months फैंटास्टिक, नो प्रॉब्लम। जो 11 जो रुपया 64 to 75 गया इन 10 months in unidirectional mode, what we call it actually, but what was the percentage? एक काम कर लीजिए, उसका भेज दीजिए 2018 का पूरा डेटा, फ्यूचर डेटा भेज दीजिए। अगर स्पॉट प्राइस भी चलेगा, let us work it out, we will come back again. What is the problem? Standard deviation देखेंगे ना सर। I am telling, there is no doubt about it, Mr. because I consider this perfect. पीताम्बरम जी ने दिया 67% I used it, that's all. 100 नहीं, 500% it works. मेरे पास डेटा है, वो इक्विटी में हो सकता है, स्पॉट रेट पे मैंने निकाला हुआ है 20 साल का स्टैंडर्ड डिविएशन, मेरे पास डेटा है। आई विल शेयर। आप एक्सेल शीट भेजिए, गूगल शीट मत भेजिए, सिंपल एक्सेल शीट भेजिए। हाँ एक्सेल शीट, वो उसको गूगल से मैं कॉपी करके भेज दूंगा, देना प्रॉब्लम। ओनली 2018 भेज दीजिए, गूगल में थोड़ा सा दिक्कत होता है। 2018 का सिर्फ सिंपल ओनली एक्सेल शीट भेज दीजिए। लेट मी वर्क इट आउट। 2000 से लेके आज तक का डेटा पूरा का पूरा मैं पूरा भेज दूंगा। ठीक है, लेकिन वो स्पॉट रेट के ऊपर है, स्पॉट रेट के ऊपर है, स्पॉट रेट में है। स्पॉट 2000 का नहीं चाहिए सर, वो ऑलरेडी स्लो चल रहा है मेरा, सिर्फ 2018 का भेज दो। मेरे पास डेटा है, वी हैव अ डेटा अवेलेबल। ठीक है, आप 2000 एक काम कर लीजिए, 2018 का थोड़ा स्टैंडर्ड डिविएशन भी काम करना है, तो इसलिए आप 2017 और 18 दे दीजिए, दैट इज एनफ। ठीक है हो जाएगा। आई विल वर्क इट आउट। 2017, 18, 19 भी दे दीजिए, मोर देन एनफ। These 3 years will cover, आगे पीछे का it will cover. We will put the standard deviation because I have मैंने वो डाला हुआ, मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सब निकाला हुआ है। एवरीथिंग इज, द शीट इज देयर, आई विल शेयर इट विद। फिर तो मैं कुछ चिपकाने का, फार्मूला डालने का, दैट्स ऑल। मेरा ऑलरेडी है, फार्मूला भी डाला हुआ है सर, फार्मूला भी डाला हुआ है, फार्मूला भी डाला हुआ है। आपको फाइल खोलना है बस, दैट्स ऑल। बस फाइल खोल का वॉल्यूम डालना, जिस जगह वॉल्यूम डालना, वो वॉल्यूम डाल के मैं वापस भेज देता हूं। क्लोज बाय 10 o'clock, we have another 6 minutes. If anything you have to ask, you can ask, or I will close by 10 p.m. Although that the gentleman said that it has gone up from 64 to 75, I'm sure the percentage strength wise, if you see, it would not have gone from 0 to 99 unidirectionally. There would have been definitely variations of ups and downs and ups, and higher high, lower lows, higher high. There would have been a lot of variations. These are the variations which we would have to cash upon while playing the reverse trading technique or unidirectional technique. Yeah, absolutely. Sir, actually, Mr. Pitambaram's formula, it helps in that way. Actually, it moderates the last 67 days and gives it in the normal distribution. True. So he may be right. The person who has said in 10 months it's unidirection, 100% is right. But in that 10 months, lot of things would have happened between 99 and 0. Yeah, that's right. वो चेक कर लेंगे, देख लेंगे। That's what. ठीक है। वो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। It will be interesting to see as to how it has actually varied during that time. So if you are prepared for the worst case scenario, then why should you worry about the best case scenario? Actually, आज ही आप भेज देंगे, कल तक मैं वापस डाल दूंगा, या परसों में वापस डाल। कल तो मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, परसों डाल दूंगा ग्रुप में, पूरा सारा का सारा ग्रुप में फ्यूचर रेट्स में करके मैं डाल दूंगा। उमाशंकर जी,
उमाशंकर जी, सर मैं स्पॉट का रेट लेने का कारण बताता हूं आपको। एक्सपायरी जब होता है, नेक्स्ट मंथ का एक्सपायरी आता है, और बाई एनी प्रॉब्लम उस दिन अगर मार्केट 50 या 1 रुपया बढ़ता है, तो आपका परसेंटेज जो आपने एक बार दिखाया था 8% से सीधा 95 गया, वो प्रॉब्लम आपको आएगा फ्यूचर में। हाँ, फ्यूचर में आएगा, पक्का आएगा, बिकॉज आप लास्ट मंथ का फ्यूचर को ये मंथ को एडजस्ट कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो प्रॉब्लम आएगा, इसके लिए मैं स्पॉट का वैल्यू ले रहा हूँ। Absolutely right, because spot increases in such a aggressive way, future maybe it will give an impact. Yeah, absolutely right. Yeah. मैं चारों करेंसी का दे दूंगा। मैं उमाशंकर जी को और पीताम्बरम जी को चारों करेंसी का 20 साल का डेटा देता हूँ स्पॉट रेट का। ठीक है जी जी जी। तो उसमें फिर अपना वो इन्फ्रेंस निकाल के आप शेयर कर दीजिए कि वेदर रियली दिस इज वर्किंग और नॉट। ओके ठीक है सर, सिर्फ 17, 18, 19 आप भेज दीजिए, बहुत है। मैं ठीक है सर 17, 18 सर वो फिल्टर करके आपको दे देंगे, नो प्रॉब्लम। सर मैं जनरल ग्रुप में मैं ये एक्सेल शीट भेजा था, आई थिंक ऑलमोस्ट 15 दिन 1 महीने पहले। उसमें मैं बाव का पीस से एनएससी से बाव का पीस से 2014 से सारे फ्यूचर का रेट, ऑप्शन का रेट डाल रखा हूँ। जनरल ग्रुप में डाला था, उसमें आप देखेंगे उसमें पूरा अभी अपडेट है 1 महीने के पहले तक 2014 से अभी तक सारे करेंसी का फ्यूचर रेट और दूसरी शीट में सारे करेंसी का ऑप्शन डेटा दोनों है। परमशिवम जी आप तो बिल्कुल पार्वती परमशिवम जैसा सामने आ गया सर। आप प्लीज इफ यू डोंट माइंड, आई अपोलोजाइज। ठीक है, मैं क्या करता हूँ उसका एक्चुअली अभी क्या हो गया, वो दूसरे शीट में ऑप्शन डेटा डाल रहा था, वो 10 लाख के ऊपर चले गए मेरे एक्सेल, उसके बाद अपडेट नहीं हो रही है। सो उसमें मैं ऑप्शन डेटा 1 साल हटाना पड़ेगा। मैं 14 से डालने लगे, उसके बाद अपडेट फ्यूचर डेटा था हो गया, ऑप्शन डेटा अपडेट नहीं हो पा रही है, 10 लाख ऊपर रोज चले गई उसकी। सर मुझे उसकी डेटा एडजस्ट करके आपने कौन से ग्रुप पे डाला था? डेली डाटा आपने आपके पास डेली डाटा है ना ऑप्शंस का? हाँ सर, बाव का भी से 4 फ्यूचर के डेटा और उस दिन का कितनी भी ऑप्शन होगा उसकी डेटा वो ऑप्शन भी सर। ऑप्शन आल्सो यू आर हैविंग ऑप्शन ओनली लो हाई ओपन क्लोज, करेक्ट ना? हाँ वही एक साल एक स्ट्राइक प्राइस की होगा ना 73, उसकी एक रेट होगा 73, इसलिए वो सीट मिलेगा। आप काफी लोग वॉल्यूम सब बोल रहे हैं ना, वो सब पुराना में वेरीफाई कर सकते हैं। उसमें सपोज पिछले महीने 76 में क्या वॉल्यूम हुआ एक दिन में, वो भी आप चेक कर सकते हैं। हाँ वो एक्चुअली पाइवेट लगा के निकाल सकते हैं। 74 अलग, 75 अलग। ठीक है, मैं क्या करता हूँ ऑप्शन में ये लेटेस्ट डाल देता हूँ, पुराना 1 साल हटाना पड़ेगा 2014 की। 10 लाख रो के ऊपर चले जाएगा, एक्सेल बंद हो गई, उसको अपडेट नहीं हो पा रही है। फ्यूचर डेटा पूरा ऑप्शन डेटा लास्ट 3 साल का दे लेता हूँ। और 4 साल से 18 बोले थे ना, कोई 18 से बोला, मैं 17 से ऑप्शन डेटा डाल देता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, लेटेस्ट में वीकली भी आने लग गया ना, उसमें नंबर ऑफ रोज बढ़ गई थी। सर मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए प्लीज। 17 प्लीज लिसन, 17 जनवरी से दिसंबर 31 दिसंबर तक का ओनली क्लोजिंग प्राइस ऑफ द फ्यूचर, ओके? And for that date only 4 entry open, high, low, close of the options. सर ऑप्शन में भी एक स्ट्राइक प्राइस होती है ना सर, मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस होती है ना ऑप्शन में भी। एक दिन में तो उसमें 8-10 स्ट्राइक प्राइस होती है ना। सर एक्चुअली क्या है, ठीक है, फर्स्ट क्लास जो मैंने अभी भेजा ना सर एक्सेल शीट, ठीक है सर, इसमें फ्यूचर का प्राइस 17, 18, 19 को चुपका दीजिए, ठीक है सर? ठीक है, मैं क्या करता हूँ फ्यूचर की डेटा डाल देता हूँ, आप उसमें आपके एक्सेल मिल गया तो आप कैसे भी काट पीट कर सकते हैं। सर जस्ट अ मिनट सर, स्मॉल रिक्वेस्ट सर, वो है ना, वो फ्यूचर का जो रेट आप डाल देंगे ना सर, मुझे वो इमीडिएटली आप शो करेगा सेलेक्ट स्ट्राइक प्राइस करके, ठीक है सर? उसी स्ट्राइक प्राइस का मेरे पास भेज दीजिए प्लीज। ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, मेरे पास है ऑप्शन डेटा, मुझे मैं उसकी थोड़ा, ठीक है, मैं देख लेता हूँ, देख के फिर वीलुक पर डाल सकता हूँ, देख लेता हूँ। जी, बस उतना ही है, उतना ही मेरा अमल रिक्वेस्ट है सर। ये चेन्नई ने डेटा डाल भी दिया है इक्विटी ग्रुप के अंदर, करेंसी का डेटा डाल दिया पूरा का पूरा 20 साल का। अपना इक्विटी वाला जो ग्रुप है ना, इक्विटी का जो मेन जो ग्रुप है उसमें डेटा डाल भी दिया है। वर्ल्ड बैंक ऑफ डेटा
वर्ल्ड बैंक डाटा है। नहीं मैंने नहीं डाला, मंजेश कुमार ने डाला है, मंजेश कुमार फ्रॉम चेन्नई, ये सुपर डेटा। कोठारी सर, हाँ मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है, अपना 10 बज गया, बोलिए लास्ट क्वेश्चन। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा बस ये है, मैं ये कह रहा हूँ सर, जनरली स्पीकिंग जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, जैसे उमाशंकर 67 डेज का ले रहे हैं, वो 124 पीताम्बरम सर ले रहे हैं, तो इसका ये मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना सर, चूंकि इसकी वेरिएशन इतनी कम होती है तो पैसे में होता है, बट जब भी ब्लैक स्वैन इवेंट आएगा तो जैसे somebody pointed out कि वो 64 से 75 76 गया है कंटिन्यूअसली 10 मंथ्स। सो 10 मंथ्स में जैसे आपने बताया ना सर कि यू विल नेवर बी एबल टू सर्वाइव। मैंने इसको टेस्ट किया था लास्ट जब पीताम्बरम सर के कोर्स के, तो वो ब्लैक स्वैन वाले रिस्क में तो मतलब कपड़े पूरे फट जाएंगे। सर ब्लैक स्वैन, इसलिए मैंने ये ब्लैक स्वैन इवेंट को मैंने एड्रेस किया। सी व्हेनेवर द मार्केट गोस अप एंड डाउन, सर बाय डिफॉल्ट उमाशंकर सर, एनी स्ट्रेटजी, मेरा सजेशन है बिफोर वी यूज और बिफोर वी अप्लाई, सबसे पहले उसको वर्स्ट केस सिनेरियो में टेस्ट करना चाहिए। सर दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। नहीं आई नो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। वर्स्ट केस सिनेरियो वो है जिसमें हमें साफ दिख रहा है सर कि 11 रुपीस इट हैज गॉन अप, and that too in 10 months time, and every month हम करते we cannot किसी भी चाहे इक्विटी हो, ये रिस्क है सर। Sir 2011 sir, I'll come back to 2011-12 we have already worked it out. 2011-12 and 12-13 with that standard deviation of 99% and above, if you start, or if you start below 0% level, that is less than 1%, whatever it may be, we have worked out that 11-12 it is 18 rupees direction. Even in that case, this model has protected and is given you a fantastic profit, very decent profits. You send the data 18 or 17, 18, 19, I will just work it out and I'll put back. There are two things sir. One is magnitude, जैसे आप बता रहे हैं 18 रुपीस। Second thing, जैसे कोरोना में भी equity market dropped by 50%, but they were just for 1 month only. Then you can survive. But if it continues in that direction for 10-11 months, which normally happens in a crash or something like 2008, it took 10-11 months to go back to the original level. Then there is a problem. First class, what I will do, what we will do, no problem. Na? You see, there is a problem. Okay, fine. We all will accept. There is no solutions. We have to accept the problems. Okay. Now what we need to do, we have to find out we have to try to find out a solution for that. Simple as that. We cannot simply we cannot close our eyes to that problem. We have to address that. No, sir. Problem is the way of life. Okay. Problem is the way of life. There is literally no problem in the world. So then everybody will get bored. The problem is the way of life. We will accept the problem. We will try to find out the solution. What you do in Corona period, there is a big crash that we can take it as a black swan event. Am I right? No, sir. Ideally? That is no. I think 2000. जैसे आपका currency में different black swans are there. Like normal equity market में I would test for 2008. 2008. See, which year you are telling black swan event for currency? Tell me. Currency where he just told us at 2018 May, where it went from 64 to 75 and that too for 10 months continuously. Fantastic. Oh, that is the black swan for currency. What we will do, no problem. No, let us accept actually. See, 2000. You give me the data for 2018 future data. Okay, I am not worried about option. 2018, 2019, 2020, 2021. Fine. In that 2018 unit direction, your problem is addressed. Okay. And 2020, there is a sudden crash in the equity market. That is also addressed. Fine. Yes. If these two are addressed, then we are safe. Yes, 100%. Now only we can come out of. Sir, it is not a question of your money invested or my money invested. If I get a problem, we approach some solutions. Fine, if we are coming out, we could able to come out of the solution, these problems. That means it's a win-win situation for both of us. Am I right? Sir. Actually, in the last Pitambar sir wale course, maybe I requested him also test it for that period 2018. सर एक्चुअली मैं एक बताता हूँ 2018 है, मैं मेरे सामने चार्ट खोल रखा हूँ
आप 2018 देखेंगे, आप मंथली चार्ट देख रहे हैं, वीकली चार्ट ले लीजिए, उसमें सिर्फ एक ही बार 64 से 68 विदाउट रेड कैंडल गई है, अदरवाइज हमेशा रेड कैंडल बीच बीच में आधा रिट्रेस आई, नीचे आई हुई है। तो आप ये बोल रहे हैं 60 से 70 वन वे गलत है। सिर्फ एक ही पूरी साल में एक जगह 64 से 68 वीकली चार्ट में कंटिन्यू गई हुई है, अदरवाइज आपकी बीच बीच में 50% रिट्रेसमेंट नीचे आई ही है। सो इसलिए ये गलत है। आप की बात जारी है, नहीं सही, एक्चुअल डेटा, यू आर राइट, एक्चुअल डेटा से ही उसको वी नीड टू किल द इशू। यू आर राइट सर, वो तो मैं भी आई एग्री विद। We will kill it, sir, because why I am very sorry to take this actually again and again. Why again and again talking about Mr. Pitambaram's, I am telling you people, please don't underestimate this model. I am telling that is वो अक्षय पात्र है, उन्होंने दे दिया, अगर वो यूज नहीं करेंगे, we are fooling ourselves. Let me put it in this way actually. Fantastic tool he has given. Don't miss out the tool, sir, for the sake of fear. Please try to find out the solution. You send any data to me, I will work. And that model can be used in 67. any product. You can use in equity, you can use in future, you can use in currency or commodity. Anywhere you can use it. ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो 99% और 0% का जो पीताम्बरम सर जी का जो कॉम्बिनेशन है, आप उस चीज को गलत चीज के हिसाब से आप समझ रहे हो। तो इसका मतलब 99% का मतलब ये है कि मार्केट वहां से जो स्टॉक है वहां से ऊपर नहीं जाएगा। इतना समझ लीजिए कि ऊपर नहीं जाएगा। ये जो हम समझ रहे हैं कि यही है रेजिस्टेंस। 99% का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस है, वहां पे हम कोई भी पुट बाय कर लें या फ्यूचर शॉर्ट कर लें तो हमें प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। वो इक्विटी में जब हम आते हैं तो हमारा कहने का मतलब है 99% मतलब वहां से शॉर्ट करना शुरू करेंगे। या आप 0% जब मान लीजिए कि 0%, 10% या 5% करीब आता है, तो हम वहां पे परचेज करना शुरू करेंगे। वो पिरामिड की बेसिस पे उनकी जो सेंटेंस है उस चीज को देखिए। हम क्या करते हैं कि हम जो आप जो कहते हैं ना ब्लैक स्विन के इवेंट की तरह कहते हैं कि वहां एक बड़ी वाली सपोर्ट है और वहां से मार्केट रिवर्स करेगा। वो तो नहीं कहते कि आपका अगर 100 क्वांटिटी बाई करना है तो वहीं पे 100 क्वांटिटी बाई कीजिए। वो कहते हैं कि 10 क्वांटिटी बाई कीजिए, 10 20 then 30 then 50 then ऐसे करके करते 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 50% जाओ। तो अगर तो एवरेज आपका नीचे होगा। तो वो फंडा इक्विटी में नहीं, सॉरी इक्विटी का जो फंडा है 99% 0%, वो फंडा आपका करेंसी में नहीं आएगा, क्योंकि करेंसी और इक्विटी का दोनों का डिफरेंस अलग है। इक्विटी में रिलायंस हो सकता है कि निफ्टी को वोलेटिलिटी कर सकता है, निफ्टी को यूएस मार्केट वोलेटिलिटी, बट यूएस जो हमारा जो यूएसडी आईएनआर है, सब यूएसडी आईएनआर तो डॉलर के बेसिस से तो मूवमेंट होता है। तो आप एक बार डॉलर का चार्ट खोल लीजिए और यूएसडी आईएनआर का चार्ट खोल लीजिए, तो दोनों का चार्ट सेम नहीं होगा। पहले तो ये चीज को समझिए। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो हैंडल और सबसे ज्यादा इंटरवेंशन होता है वो होता है एलबीआई का। तो इक्विटी मार्केट और करेंसी मार्केट को कभी दोनों एक साथ मत देखिए। करेंसी में अगर 2 रुपीज 3 रुपीज तेजी होता है तो मतलब आप उसको समझ लीजिए कि बहुत हो गया, जरूरत से ज्यादा हो गया। बट इक्विटी में 50% करेक्शन होता है और 200% तेजी हो सकता है। तो दोनों अलग है। इक्विटी मार्केट में जो 99% हम आते हैं, 0% आते हैं, तो वहां पे ग्रेजुअली हम बाई करना शुरू करेंगे। बहुत बार लोगों को मैंने ये सुना हो कि हम यहाँ पे बाय करते हैं और मार्केट नीचे चला जाता है। नहीं, उनकी जो सेंटेंस है हम उस सेंटेंस को समझ नहीं रहे हैं। बात वो कह रहे हैं जैसे कि हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो मार्केट नीचे नहीं जाएगा, आप बाय कर लो, और जैसे नीचे गया तो हम स्टॉप लॉस लगाने लगे। तो उनका वो सेंटेंस नहीं है, वो सेंटेंस है आप ग्रेजुअली बाय करना, पिरामिडिंग बाय करना शुरू करो। तो चीजों को समझिए, इस चीज को, ये चीज को आप मतलब ले रहे, बहुत जन इस चीज को गलत ले रहे। वो मैंने कैंडल देखा सर 18 में 8 मंथ लगातार इंक्रीज किया सर, रिट्रेसमेंट नहीं यार। है। अभी आप लोग सब रिसर्च कर लेना, मंथली वाइज देख रहे हो, कम आउट इन द नेक्स्ट, ये अगर डेली वाइज देखोगे तो उस चीज को समझ में आएगा। ठीक है, चलो, थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट टू एवरीबॉडी एंड स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर उमाशंकर जी फॉर शेयरिंग हिज मॉडल। या थैंक यू वेरी मच उमाशंकर जी कि आज आपने ये स्ट्रेटजी बताया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और आपका सेज मॉडल भी जल्दी से बताओगे लोगों को। थैंक यू। थैंक यू सर। गुड नाइट। Good night. Fine. Good night. Good night to everybody. Yeah. Thank you.